ribbons, Mojomi, Scrunchies Love. Oh wow. Clothing partner FaithX. इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं, इससे एक चीज पता लग जाती है हम सबको। क्या पता लग जाती है? आई कैन सी चैट बॉक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट हमें इससे एक चीज पता लगती है कि आज का जो फेस्ट है ना, वो अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि स्पॉन्सर्स के बगैर कुछ नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I want to thank all the sponsors, and I want to thank everyone who have joined. Good morning to everyone. And I can see around 215 people have joined. I can see many girls, and I just want everyone to unmute themselves, because we wanted कि हम एक offline fest करें, but due to the situation we were not able to do a offline fest, but we are conducting a virtual fest. But I promise that I will give you a feeling that you are in an offline fest. Okay, this is my promise. मैं पक्का ही पूरा करने वाला हूँ। इससे पहले हम इस बात पर आ जाते हैं कि मैं कौन हूँ। My name is Nipun Nijaman and I am a freelance anchor. You can find me on my Instagram handle, which is Nipun Nijaman. You can follow me there. You can message me there कि आप क्या चाहते हैं मैं आज के इवेंट में क्या क्या करूँ आपके साथ, कैसे इवेंट को और अच्छा बनाएं। पर उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी कैसे है। चैट बॉक्स में ओ वाओ, स्लेइंग एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच आस्था। सो पहले मैं देखूंगा कि कौन कौन किसका किसका कैमरा ऑफ है। जिसका जिसका कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन करिए सारे। आई कैन सी काव्या, यू शुड ऑन योर कैमरा। प्रेरणा, मलिक, तान्या, एवरीवन सारे अपना कैमरा ऑन करिए। एंड आई जस्ट वांट कि आज का जो इवेंट है ना, हम इतना एनर्जेटिक और इतना बढ़िया बनाने वाले हैं ना, ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय। अनम्यूट योरसेल्फ फटाफट, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, आई जस्ट टेल यू वन थिंग, आई एम अ पंजाबी, and being a Punjabi, I am a big fan of Vicky Kaushal. Okay, am I audible? Give me a thumbs up if I'm audible. Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. Yeah, yes. I'm a big fan of Vicky Kaushal, and I yeah. समझ रहे हो, सारा chat box में आ रहा है। I'm a big fan of Vicky Kaushal, and trust me, I admire him. And जब से recently उसकी शादी हुई है, विक्की भाई की हमारे शादी हुई है, तब से तो मैं और ज्यादा उसको एडमायर करने लग गया हूँ। एंड मतलब विक्की हाउस द जोश कर करके कहाँ पहुंच गया सो हम भी विक्की भाई की टेक्निक निभाएंगे इस टाइम पे। विक्की भाई की टेक्निक को अपने अंदर डालेंगे एंड आई से हाउस द जोश। मुझे सबका हाई सर सुनाई देना चाहिए। ओके, मैं अपनी वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ। मैंने अपनी वॉल्यूम फुल कर दिया। अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Vanchika Bhatika is almost there to unmute herself. Kanchan Kumari, Ashima Garg President. How's the josh, ma'am? Thank you for having me. Very high. It's very high. Very high. I can see. Okay. On the count of 3, 2, 1. I want Kalpana अपना mic on करिए आप बिना फटाफट। मैं सबका एक ही नाम ले सकता हूँ, मेरे को बहुत सारे speakers lined हैं आज। Okay. On the count of 3, 2, 1. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. Okay. मुझे लग रहा है आप सब सोए हुए हैं अभी भी। Keep your hand like this. Both the hands like this. Everyone. How's the Josh? Hi sir. Well done. Okay. फटाफट सुबह का टाइम है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। Everyone on the screen. Up. When I say up, you will look up. When I say down, you will look down. Okay. Up, down, up, down, up, down. वाह यार कितने प्यारे हो तुम, मेरी बात कैसे मान रहे हो। Down, up. Okay, I can see Shashti Shri, आपका बर्थडे आज। Okay, not your birthday. उनकी बैक स्क्रीन पे हैप्पी बर्थडे लिखा होता, तो that's why I thought अगर उनका बर्थडे है तो हम हैप्पी बर्थडे विश करें। लेफ्ट, फटाफट लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ओके, वेरी नाइस। आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज होगी। तो मुझे ये बताओ, आप में से कौन एक बॉलीवुड बफ है? Everyone, I think 90% of the crowd is from Delhi University, and Delhi University is my favorite. I just missed Delhi University. I have graduated from Delhi University, and I just so miss it. और आप जो थर्ड ईयर में होंगे ना, ट्रस्ट मी, उनके लिए ये बहुत हेवी मूवमेंट होता है। जिनका लास्ट फेस्ट होता है ना, वो ये चीज फील कर पाते हैं कि
कितना इमोशन, कितना कितना प्रेशर, कितना इमोशन, कितना हार्ड वर्क लगता है एक फेस्ट कराने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द कोर टीम. आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर हैविंग मी. ठीक है, हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम और. बाय 11:30 विल स्टार्ट द प्रोग्राम. सारे स्पीकर्स लाइंड अप हैं, बहुत फन करने वाले हैं, बट उससे पहले हम अपना फन करेंगे सो दैट हम सब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं. आई डोंट वांट कि आप इसको एक वर्चुअल इवेंट की तरह एंजॉय करें, आप इसको एक ऑफलाइन इवेंट की तरह एंजॉय करें. ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर हम सब भगवान से प्रे करते हैं कोविड चला जाए. ठीक है आशिमा, आप नेक्स्ट ईयर फिर से मुझे बुलाओ और हम यही फेस्ट, ऐसा ही फेस्ट ऑफलाइन करें. ओके, सो हाउ इज नेक्स्ट द ईयर जोश मैं कैसे अगेन? बुलाऊंगी? नेक्स्ट ईयर मैं नहीं नहीं, जा आप रही हूँ बुला इस दो. साल. नो 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 नो. ओके, हाउ इज द जोश एवरीवन वंस अगेन? Hi, sir. ओके, थैंक्स थैंक यू सो मच. सो हु इज अ बॉलीवुड बफ, मुझे ये बताओ फटाफट. ओके ओके, आई कैन सी फ्यू हैंड्स. आई वांट मोर हैंड्स, आई वांट मोर हैंड्स. ओके, उन्नति जोशी. उन्नति जोशी, यस. मैं एक डायलॉग बोलूंगा. मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म का है. ओके ओके. ओके, डन. डन. इंग्लिश में बोलोगे हिंदी में बोलूं? है बॉलीवुड मूवी कैसे? का. हिंदी में बोलो फिर. हिंदी में बोलो. उन्नति, कैन यू जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगेन? उन्नति, या यू आर देयर. ओके, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ओम शांति ओम. कंप्लीट दिस डायलॉग, मैंने आधा बोला है. सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, समथिंग लाइक दैट. ओके, टेल मी द एक्ट्रेस, किसने बोला था ये डायलॉग? दीपिका पादुकोण. वाओ, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. ओके ओके ओके, नाउ अरीबा अनवर, आपके लिए. हर टीम में सिर्फ एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ. विच फिल्म, विच डायलॉग एंड हु इज द एक्टर? हर टीम में सिर्फ एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ. अरीबा, मेरा नाम नहीं लेना. या रनिश. Movie buff. मैं movies नहीं देखती. ओके 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 ओके, लेट्स गो टू सिमर चोपड़ा. सिमर चोपड़ा, सिमर चोपड़ा, अनम्यूट योरसेल्फ फटाफट. Okay, I think she's not available. Let's go to Devanshi Gupta. अरे चैट बॉक्स में आंसर नहीं देने यार, जो हैंड्स अप कर रहे हैं वो बोल ही नहीं रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ. ओके, लेट्स गो टू, किसी को पता है इसका आंसर? मैं फिर से डायलॉग बोलूं? भाई राम, तुम कैसे बॉलीवुड बफ हो यार. Sir, I know. कौन? Who? First of all, I'm Megha not sir. Shri. My name is Nipun. Megha Shri, Okay, please go Nirupam, for I it. know. Yeah, This is go for from it. Chak De India and Shah Rukh Khan all this dialogue. Yes, yes, Shah Rukh Khan. Okay. Do we have any Simran here? Do we have any Simran here? Any Simran? Yes. Wow, wow, wow. Simran, one dialogue for you. Ja Simran, ja जी ले अपनी जिंदगी. Which movie? And दिल वाले actor तो चल. दुल्हनिया ले जाएंगे. Oh wow, actor का नाम बता दो मुझे. I don't remember the name. Father's name नहीं याद मुझे. Anyone? किसी को पता है father's name? Amrish Chal. Puri. Yes. Well done, Amrish Puri. Amrish Puri. That's great. That's great. Okay, so जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लेडी अर्विन कॉलेज में हैं. So लेडी अर्विन, JMC, these colleges are famous for सुंदर सुंदर लड़कियां, and I'm very happy that I'm hosting it for you. So one dialogue. हमारी छुरियां छोरों से कम है कि? Which movie? दंगल. दंगल. Wow, wow, wow. Who's the actor? Amir Khan. Wow, wow, wow. That's great. That's great. Okay. One more dialogue. One more dialogue. अब मैं इंडिविजुअली पहले एक किसी को पिक करता हूँ जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे. एंजल, 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 एंजल.
Hi Angel, how are you? I'm good. How are you? You are good. I am very good. You can see the smile on my face. I am very good, very happy. Are you excited for today's event? Yes, I'm very You are excited. excited. कौन सा स्पीकर के सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? Apurv Gupta. अरे वाह, मुझे लगा मेरा भी नाम ले लूंगा मेरा। कोई मेरे लिए एक्साइटेड था वैसे जेन्युइनली? मुझे ना आशिमा कल बोल रही थी। आशिमा, अरे सबके थैंक्स यार, थैंक्स। अरे वाह वाह वाह। ओके एंजल, फॉर यू, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही टाइम पर कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लग जाते हैं। विच मूवी? छोटा है ये। क्या बोला आपने? छोरे. I guess. छिछोरे, अरे वाह। क्लैपिंग 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 फॉर एंजल। ओके, नाउ आई विल आस्क अमीशा 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 के अमीशा के Hello. शुड आई रिपीट द डायलॉग? Yes. ओके, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही टाइम पर कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लग जाते हैं। विच मूवी? Chichore. हु इज द एक्टर? छिछोरे? मुझे डाउट हो रहा है यार तुम सब पे। ये एनीवन जबान है वांट्स? दीवानी। अरे I वाह, do. हु इज दिस गाय? प्लीज कैमरा ऑन करिए अपना यार एक बारी तो। इनके लिए तालियां होनी Okay. चाहिए। Yes. मुझे लगता था ये यूथ की सबसे फेवरेट मूवी है और यही नहीं आप बता पा रहे। हु वाज द गाय? Ranbir Kapoor. अरे, who was the guy in the video call यार? Who was the guy from the meeting? किसने बोला इसका आंसर? मैं उसको एक गिफ्ट दूंगा। We have exciting gifts, so we can give. जिसका Yes, भी है yes, बता yes. दो. हाँ. We can give नहीं, we will give. मैं तो बता रहा हूँ मैं दूंगा, आप बताओ कौन है? चलो okay. I said Yes. YJHD. Okay. That's right. Okay, that's right. रणबीर कपूर is the actor. बहुत प्यारी फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देखना, आज ही जाकर देखना, थोड़ा टाइम निकाल के आपको अच्छा लगेगा। ओके अगेन, सो वी आर इन जेएमसी। ओ सॉरी मुझे पता है जेएमसी और लेडी उनको बहुत फेमस है। अगेन वी आर इन लेडी ओवन कॉलेज। तो एक डायलॉग छोटा सा है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। विच मूवी? जब भी जब we met. जब भी मैं करीना कपूर। कौन कौन अपनी फेवरेट है? कौन कौन अपनी फेवरेट है ये बताओ। ये मेरी भी फेवरेट मूवी है। This is one of my Radhika. favorite movie. राधिका जैन इज waving her hand कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। बहुत बढ़िया, अपना फेवरेट होना चाहिए लाइफ में। एंड टुडेज टेस्ट अबाउट दिस ओनली, कि आप अपने अंदर एक सेल्फ स्टीम लाके, एक मोटिवेशन लाके कैसे आगे काम कर सकते हैं। ई समिट इज ऑल अबाउट दिस ओनली। तो वी जस्ट नीड टू बी श्योर अबाउट अस, वी शुड वर्क हार्ड। एंड आज जो भी फेस्ट में हमें आके लोग बताएंगे, हमें उनसे मोटिवेशन लेनी है एंड हमें आगे बढ़ना लाइफ में। ओके, सो वन लास्ट डायलॉग। Are you guys ready? आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? Complete it and tell me. मेरे Who is पास the माँ actor? है. दीवार. Oh, अमिताभ wow, बच्चन. wow. अरे वाह, मुझे पता, सही बताऊं मुझे भी नहीं पता है कौन सी फिल्म का नाम है, ऐसी तुक्का हुआ। वेरी नाइस, जिसने भी बोला वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लैप। Once again, unmute yourself. How's the Josh? Hi sir. With your hands, with your hands. How's the Josh? Hi sir. Yes, everyone should do it. और ये एक लड़के की आवाज आती है ना, मेरे को अच्छा लगता है। पता है आज ऐसा हो रहा है कि पहले लड़कों की आवाज में एक लड़की की आवाज अच्छी लगती थी, आज लड़कियों की आवाज में एक लड़के की आवाज अच्छी लगती है। वो ठीक है कौन? प्लीज आगे आओ यार, प्लीज रेज योर हैंड एंड कैमरा ऑन करिए अपना, मत शर्माओ, डरने की जरूरत नहीं। कैन एनीवन टेल मी हु इज दिस गाय? हिडन स्टार। यार इस हिडन स्टार से मैं बात करना चाहता हूँ यार, बट ही इज नॉट कमिंग। Okay, anyway, so hello. Am I audible? Yes you are. Yes, you are. Okay. Last dialogue जो हम 2:30 पे बोलेंगे सबको। लास्ट डायलॉग जो हम 2:30 पे बोलेंगे सबको। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। विच मूवी? कुछ कुछ होता है. कुछ होता है। सरदार जी। हाँ जी सरदार जी बोल रहे हैं।
सबकी सबकी फेवरेट फिल्म बोली गई है। मैं जानता हूँ, मैं लड़कियों के दिलों के बहुत पास हूँ, मैं समझता हूँ लड़कियों को क्या चीज अट्रैक्ट ज्यादा करती है, मैं समझ रहा हूँ। नाइस, I thought आप बोलोगे अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। नहीं वो मैं लास्ट में, वो मैं बोलूंगा। वो आप सब बोल रहे थे दूसरी जा रही हो ना जाओ, बट मैं ही बोलूंगा ना कि अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फेस्ट के बाद दुआ में याद रखो। बट यू नो समझो फीलिंग, समझो आशिमा। अब आशिमा देखो प्रेसिडेंट है, मैं आशिमा को कुछ बोल नहीं सकता यार, उसका वैसे तो मुझे 1 मिनट में वापस भेज देगी, तो इसलिए मैं आशिमा को कुछ बोल नहीं सकता। ओके, सो आर यू गाइस रेडी? पक्का एवरीथिंग इज सॉर्टेड? Okay, so I'll unmute myself. Okay, we have 5 6 minutes more before the event starts. I'll mute myself and I'll say a word. You have to tell me कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? And मैं आपको एक heads up दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ वही words बोल रहा हूँ जो अभी पिछले इतना बुरा टाइम सबका निकला है, कोविड की सिचुएशन में, सबके साथ इतना ट्रेजेडी हुई, and it was not a good time for us. So उसमें जो वर्ड्स ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प करी ना, मैं वो वाले वर्ड्स बोलूंगा, ठीक है? मतलब हेल्प करी, या वो वाले वर्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इन फ्यूचर हम उनके लिए, हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है, मैं सिर्फ वो वाले वर्ड बोलूँ। ओके, रेडी? ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। एंड द फर्स्ट Vaccination. 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 मैंने म्यूट किया था ना अपने आप को, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आई ओके, सेकंड वर्ड Phone. Food. Wow. Food. फूड, यस। ओके, सो ये जो वर्ड है ना, ये आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आज जिसके लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। 3 Motivation. तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है यार, तो तुम जब अपने हाउस से जोश बोलते तब शोर क्यों नहीं जाते, तब तुम्हारी आवाज कहाँ जाती है यार? ओके, कीप योर हैंड लाइक दिस, हिप 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 हुर्रे। Make some noise, okay? Make some noise. Get crazy. Enjoy. This is the time to enjoy, yaar. We are not able to go to the colleges, and we are at home, and we have this privilege that कि हम ये चीज attend कर पा रहे हैं, and thanks to the e-cell जो इतना अच्छा event organize करा रहे हैं हमारे लिए. Just enjoy it. Okay. Last word. Happy. I want each and everyone to be happy today, because this is the time to be happy. एंड ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए हमें जो भी चीजें हैं हमारे पास। ये मेरी तरफ से एक मोटिवेशनल स्पीच थी, क्योंकि आज बहुत सारे आज मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा आप किसके लिए एक्साइटेड है? मतलब कौन सी स्पीकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? पूरे ही समिट के लिए एक्साइटेड है। नहीं, सर सबके लिए एक्साइटेड है। सबके लिए एक्साइटेड। यार ये लड़का कौन है यार, एक बार ही सामने आता मेरे भाई, प्लीज यार। ओह थैंक यू आस्था, शी सेड निपुन, वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी लो भाई, सर क्या आपके लिए हाल एक्साइटेड है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। बट व्हाट इज योर नेम यार? आई एम नॉट एबल टू सी यू। Aman this side. Aman, can you just switch on your camera? I just want to see you. अभी मैं हालत में नहीं हूँ कैमरा ऑन I'm very happy that a boy is मन भाई देखो, लड़कियों के कॉलेज में एंट्री मिल जाए ना फेस्ट के दिन, उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती। यस सर। अरे मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको ये बात। अच्छा मैं Thank you यार। भाई एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ जी। अभी ये इस फेस्ट के लिए मेरे को किसी ने इनवाइट किया था, ठीक है? तो Yes. 2 दिन से उसने बोला कि भाई ज्वाइन करना, ठीक है? तो फिर मैंने ज्वाइन किया ये, और ज्वाइन करते ही मेरे को ये जो क्वेश्चन मिला कि ये डायलॉग किस मूवी का है, तो फिर मैंने Okay. सुनते ही मतलब कि जवाब देना पड़ा, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को ये
Okay. Okay. I can understand you. I can understand you. Thank you so much for joining, Gagan. Thank you so much. And ladies and gentlemen, we are just about to start the event. And let's start the event in just 2 minutes. Nipun, how you managed to look so good every time. Thank you so much. Just, I just said it. हम Punjabi हैं. We Punjabis are, always able to do this. So we are just able to, we are just about to start the event in just 2 minutes. So ladies and gentlemen, अपनी seat पे बैठे रहो. Be energetic. Be very happy because this is the event we will enjoy. Just 2 minutes and we'll start the event. Okay.
Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to the Entrepreneurship Fest of Lady Urban College. My name is Nipun and I am your host for today. And now we will start the event with the lamp lighting ceremony. And I would like to request the staff members, Dr. Pooja Gupta ma'am, Ms. Mitali Yadav ma'am, and Ashima, the president, to come and do the lamp lighting ceremony. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः So as you guys know, as you guys can see, the lamp lighting ceremony is over. So let me invite Ashima Garg, the president of ESL of Lady Urban College. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Ashima Garg. Thank you so much. Thank you so much. Satisfaction lies in the efforts, not in the attainment. Good morning, one and all present over here. I, Ashima Garg, President and founder of Entrepreneurship Cell, would like to welcome you, each and every one of you, to the second edition of Entrepreneurship Fest of Lady Urban College, that is E-Summit 2022. The speaker panel is lined up with a lot of inspiration and fun session for you. So grab a snack and sit tight. Now, we should never forget the people who were there with us throughout this journey. On this note, I would like to extend my gratitude towards our college and our director, ma'am, Dr. Anupa Sidhu, who gave us this wonderful opportunity to conduct this event for each and every one of you present over here. Our staff advisors, Dr. Pooja Gupta and Ms. Mitali Yadav, who are with us today, they have given us abundant support and guidance to make this event happen. Ms. Mitali Yadav always pushed us to do better each and every day. Dr. Pooja Gupta has been our backbone in conducting this event. Dr. Pooja Gupta is the one who introduced entrepreneurship in our curriculum and founded the faculty member who founded ESL. She has been convener for Skilling Entrepreneurship Initiative in our college. Indeed, without them, we were incomplete and our event would be incomplete. Last but not the least, my heart is full and my eyes are shining. My team, Entrepreneurship Cell team, we have been working hard for this event for past 3 months. We earlier planned it to be an offline event, but due to COVID, we had shifted it online. Safety comes first, of course. I might be the one delivering the speech in front of you all, but it would never ever have been possible without my team's immense dedication and perseverance. They have been with me working hard to make this event a huge success. So hope each and every one of you take a lot of inspiration and motivation and enjoy the event and make it a great success. Thank you so much. On this note, I would like to welcome our staff advisor, Dr. Pooja Gupta, to address the gathering. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ashima. A very good morning to everyone. I firmly believe ideas are the currency of the future. And we are already in the age of the idea. The organization that can develop a culture of creativity and design thinking will be the leaders and innovators. Good morning, everyone. Once again, I, on the behalf of ESL, Lady Urban College and Lady Urban College, welcome you all
to one such initiative of eCell, which is eSummit 2022. I also welcome the battery of speakers who have made it to today's event. It is so encouraging to have them, and the participation of such industry leaders showcases the importance of it. Thank you so much, our industry leaders, our speakers for today's event, for giving us their valuable time for encouraging a huge, vibrant, young mindset. We have today more than 850 registrations already in the event. Thank you so much for making it a success for Lady Event College and for ourselves. So let's walk the path, the journey of innovation together. The source behind this inspiration is our director, Dr. Anupa Sidhu. She had some prior commitment. She couldn't make it to today's event, but she had sent her message that let's innovate and let's make India a better place to live in and a world leader. Thank you so much, Ashima, for today's event and the entire team. And I just hand over the forum to you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your motivating and kind words. Definitely it would not have been possible without you. On this note, now I would like to invite our staff advisor, Ms. Mithali Yadav, to say a few words. Hello, everyone. Thank you, Ashima, for inviting me. Though I'm not well, I just wanted to welcome all our participants, and thanks to all the speakers and panelists who are here with all of us. And I hope everyone is going to enjoy today's event. And once again, welcome all of you and enjoy today's event. Thank you, Ashima, for organizing it. And thank you so much, the whole team of eCell, for doing so much, so great efforts for being or make this event happen today. Thank you. Thank you so much, ma'am. Over to you, Nipun. So, ladies and gentlemen, once again, I welcome you all to the Entrepreneurship Fest of Lady Event College. And thank you so much, Pooja Gupta ma'am and Mithali Yadav ma'am and Ashima Garg, because आप सबके बगैर ये event possible नहीं था. You know, I have personally hosted many fests, many college fests, but I personally feel a thing like eFest is the most important, because these things motivate people, motivate students to be, you know, future entrepreneurs and a speaker like figure. So we have a very good panel set for today. We have, you know, 7 speakers coming up right away for us. Every speaker is so motivating. You know, I am so excited because I personally feel that, you know, it is my honor to host for such speakers who have done a lot in their lives. So you guys, I think you guys are excited, more excited than me. How many of you are more excited than me? I just want a hands up. Wow. You know, I just said, this is a virtual event and I want everyone to enjoy this as this is an offline event. Okay, are you guys ready? And are you guys excited? I want you should unmute yourself and tell me that you are excited. Are you guys excited? Very excited. Very excited. Very excited. Only 2, 3 weeks. Only 2. Very excited. I said, are you guys excited for today's event? Super excited. Wow, that's the spirit. I just want your josh should be high and just kill it. Today's event will be great. And I just want to thank the core team once again, because
nothing would have been possible without you. So, ladies and gentlemen, our first speaker is Mr. Anil Basin. You know, I feel so happy to do something for a guy like Mr. Anil Basin. I just feel so damn happy because I personally I'm a freelance anchor and I am an entrepreneur by myself also. So I just look after such people. So Anil Basin is the president of Havells India with over 30 years of experience as business development, assistant general manager at Bajaj Electrical Limited in 1982, and worked his way up to becoming the president of Havells India 2014. He has been honored with several awards, including Peter Drucker Memorial Award, Brick of Change Award by Mr. Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog. Wow. Entrepreneur Excellence Award of the Year, and a lot of more. Wow. Ladies and gentlemen, are you guys ready for Mr. Anil Basin? Ladies and gentlemen, I welcome on stage Mr. Anil Basin for us. Please give a round of applause for Mr. Anil Basin. Maybe sorry, I was on mute. So as there's a technical glitch, I have received a message that he will join us in another 2 to 3 minutes. So let's just continue. And I just want to ask one thing: how many of you feel like that they can become a future entrepreneur? Like anyone can raise your hand. Do you feel like that? I can become a future entrepreneur in future. Anyone? Oh wow! I can see Anushka Baiswal raising her hand. So what do you want to do in your life? I'm not a Shark Tank judge, so I cannot judge you, or I cannot say that ये मेरी expertise नहीं है, मैं आपको join नहीं कर पाऊंगी. But I just want to listen that आपका क्या, what is your future goal and what do you want to do in future? Do you have like a goal? Yeah, so I aspire to become an entrepreneur, woman entrepreneur, because I really have interest in business. I don't want to do job because I think in business you don't have, first of all, you create employments to a lot of people, and secondly, I think in business you are your own boss. That's why. So probably I'm gonna I am from graduating in the BSc honors in food technology. So maybe I'll open my own bakery and something like that. So I'm planning for being a good entrepreneur. So let's see. Wow, that's great. We have around 350 participants, and I promise that all 350 participants will come to your bakery for having some pastries and some cake. Okay, done? I would love okay. to. I can see Aditi. Aditi, your hand is up. So can you just tell us your goal? What do you want to do? Yes, unmute yourself and just tell us. Aditya, you are on mute. Yeah, right. Am I audible? Yes. Hello. So right now I'm just exploring, I'm exploring the things around me. How can I contribute? And I'm just finding the reasons that can help the society. I can work on it, and then I can build a huge empire on my own. I'm just surfing right now. Wow, ladies and gentlemen, please give it a round of applause for these two members, because if you have a thinking, wow. She is, you both are in your young age, and you are thinking to do a revolutionary change for the environment, for the people, because as the past time have gone and COVID time has gone, everyone wants to work for the environment, for people, and such kind of thing will definitely give you benefit.
I genuinely salute you, and I look forward that I see you as future entrepreneurs. And I can see Ishan. Let's give it a chance to a boy, because girls are zyada hain. Ishan, what do you want to do in future? Sir, I am a BTech student and I want to develop a waste to energy plant so that it will help the environment and it will also solve the electricity issue that we are facing. Because Wow. electricity crisis is a very big problem. It is generating a lot of global warming, and the pollution is the second contributor. So I will use first contributor of global warming to eliminate the second. Wow. Ishan, can you just tell me your age? Sir, I am 19. Wow. When I see people who are 18 and 19 and they are thinking like this, I just feel so happy that I am from this country. I just love it. I just love it. I don't know what was I doing when I was 18 or 19. I was just thinking about to host a fest in college, and I was just happy कि मैं वो कर रहा हूँ. I just feel very happy, and I wish you all the best, Ishan. And I can see Yash Garg. Can you tell me what do you want to do in your future? Actually, sir, we are same. We are having a same plan. Ishan, Oh, we are from wow. both same colleges. We will work together. Wow. देखो partnership से better तो कुछ है ही नहीं. Very amazing. Very amazing. So, do we have any other entrepreneur there who is left and want to share their plan? Sanya Sarda. Yes. Hi, Nipun. I wish to have a nutrition-based startup company. I want to work in that field, nutrition, as I'm a home science student right now. So after my master's, I plan to start something in that field on my own. Wow. That's great. So, ladies and gentlemen, are you guys ready? Yes. So I have a good news for you all. I have a good news. Yes, I have a good news for you all. We have our first panelist. I'll repeat again, and I just want everyone to clap for him. And I am very happy that I am starting the day with a speaker like him. Mr. Anil Bhasin is the president of Havells India with over 38 years of experience in business development and project management. He started his journey as an assistant general manager at Bajaj Electrical Limited in 1982 and worked his way up to becoming the president of Havells India 2004. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. Anil Bhasin, former president of Havells India Private Limited. Thank you, Nupun. Am I audible clearly? Am I audible? Sir, yes. Yes, sir. Thank you, Nupun, for the kind words. Let me tell you, I started my career with Procter & Gamble in 1980 after passing out the BSc. And I secured only 58% marks in BSc. In 11th also, I secured only 58% marks from Kendriya Vidyalaya. So when I came to Delhi, I didn't get admission in Delhi University. You all are fortunate that you are in Delhi University. So I passed out from Government College, Gurgaon. And from there, it is an history. So I worked in Bajaj Electricals for 18 years. Prior to that, 1 year with Procter & Gamble. I'll tell you why I left Procter & Gamble at the end of the story. And then I worked with Singer India for 4 years and Havells India Limited for 17 years. So I mainly worked with two companies, one company 18 years, the other company 17 years, a long inning in both the companies. And I superannuated in year 2020, October. And now I am writing a book. My book would be published in the next book fair. And I am writing a book on Reset Your Life. And mainly it is for the college students, sharing my own failures, what I have failed in my life and learning lessons from that. And I do webinars with the colleges. I've done more than 150 webinars in the last 1.5 years. And I do some consultancy also to some of the organizations. So I don't have any presentation to do. If you can remove me from the co-presenter, then would be fine, because on the screen some entering and the other things are being seen into it. So that I think now it's clear. Or you can remove me. I don't have any presentation to share because the time given to me is only very short. I normally speak for an hour's time, but I'll
in these 20-25 minutes, I'll try to speak for your knowledge, whatever is there. You see, the first thing which I would like to share with you is that follow the change. We upgrade our mobile and the laptops every 3 months or 6 months, but we don't upgrade ourselves. Our human body grows till the age of 25 naturally, but the mind grows till the time we live. So whatever we eat, it goes down below the neck, but whatever we think, it is above the neck. So one has to see that your learning is to be continuous. Your earning in your life is directly proportionate to your learning. Don't think that you have done graduation or post-graduation, that is the end of learning. Every day you will have to learn. So one thing is very, very important. You have to update yourself, otherwise you will be outdated. The second thing is that live in now. We never thought that this kind of pandemic also will come at this stage of life, but it has come. We have to prepare. And during this pandemic time, those students or those people, those who have prepared themselves, has been more beneficial. So you have to prepare when the pressure is low. At this point of time, the pressure is low. We can do more of the preparations. So in the army barracks, it is written, if you sweat a lot in the time of the peace, you will bleed less in the time of war. So always be focused on what you want to do. There is a lot of distraction because of the mobile. Every now and then we go to the mobile, check the WhatsApp, check the Facebook, check the Instagram. Don't waste time on the mobile unnecessarily. I see in the presentations also, half of the students are on their mobile. Even when I am live in the auditorium also, half of the students are on mobile. So I tell them that if you can leave the mobile for half an hour for your own benefit, I am there to tell you, advise you what are there. But if you are more interested in your mobile, then go and see the mobile outside the conference hall. The third thing is that you have to enhance your quality of life. See, our grandparents have lived the life through survival. They didn't have the means what we have. Our parents increased the standard of life. They gave us the car, mobile, telephone, house, everything they gave us. But today's generation is the fortunate generation that they can improve the quality of life. When I say quality of life, then you have to see that whatever time you have, you should spend quality time for improving your life rather than improving the standard of life. Otherwise, there are two important alphabet. B stand for birth, which is already there, and D stand for death. So in between, you have to change. Unless you change and you live in now, nothing is going to happen to you. The fourth point which I would like to emphasize is find a balance. In school and colleges, we have gone through lemon and spoon race. And in lemon and spoon race, a person who wins the lemon and spoon race is not the person who runs fast. Is the person whose lemon is there in the spoon till the race is finished. So one advice to you is, for chasing your career academic goals, please do not compromise on your health, family, and relationship. I'll once again repeat, in life, there is not a rewind button that if you get overweight, you will have to take a lot of time to go back to the normal weight. So please take care of health, because in India, the kind of diseases, the kind of the BP, the kind of heart pressure, the heart attacks, and the kind of the sugar, which is coming nowadays at a very early stage, is very, very challenging. So one advice to you is that please don't compromise on your health. Please spend 1 hour daily on your health. You assume that God has made this body, but God has given you this body. You have to maintain it. The way you maintain your car, the way you maintain your mobile, you put your guard screen on the screen guard on the thing so that it doesn't break. And in cars also, you get the regular servicing done. So I don't say that you go and join a gym tomorrow, because I know that most of the people, those who join gym, are for the interest of the gym, not for themselves, because they only join for a few days and then they pay the fees for the full year. So always focus on your family, health, family also is very important. Please don't ignore family, because during this pandemic period, we all have seen that family has been the very closest to us, and we are all fortunate that we have been very close to our family. And the third important thing is relationship. You see, 95% of the people are hello friends, but 5% of the people are real relations, your real friends. So please invest on your relationship.
And the fifth point is that you have to be yourself. Don't compare anything with anyone. I think in our family background also, most of the people in our family also, they do compare. I have done the study that 10 lakh students appear in the IIT. Only 5,000 general seats are there. Those who don't get admission in IIT, they don't deserve to be live in this life. But we compare, उसका बेटा IIT में चला गया, उसका बेटा का CTC हो रहा है, उसके बच्चे की यहाँ नौकरी लग गई. I think compare नहीं करना चाहिए. हम सब लोग आपस में भी अगर बहन भाई हैं तो एक दूसरे के साथ compare नहीं करना चाहिए. एक अगर भाई कहीं IIT या कहीं IIM में चला गया तो ये मतलब नहीं है कि सभी को IIT IIM में जाना. हम 5 अगर घर में बहन भाई होते हैं तो या 2 भी होते हैं तो दोनों का अलग अलग अपना डिफरेंट होता है. तो आज भी देखिए क्वेश्चन पेपर जो है मल्टीपल चॉइस में अलग अलग आता है. तो आप ये मत सोचो कि किसी का आप कॉपी करेंगे तभी काम जो है वो चलेगा जी. And the last thing for the life, I'll now is that you should be a good storyteller. You should be a good communicator. In your life, if you want to be successful, there are 2 skills which are very, very important. First is the people skills. Second is the communication skill. And let me clarify here in communication. Some of the people, they get mistaken that good English speaking or fast English speaking is a good communication. Let me clarify here you. English is a language. Communication is a skill you have to acquire. Indira Nooyi, when she went to US in the Yale University, in the first year, she failed in the subject called communication. Why she failed? Because she used to speak very fast English. So fast English speaking also is not a good communication. So you should know that how to communicate within yourself and the things and all. Now I'll tell you some of the shocks which you will see when you go to the professional life. You see, the first shock after the college, when you go into the professional life, you will have the shock of the knowledge and the language. The studies what you have done till today, unless you go into the field where you want to go, you will be going in different fields and you will have a knowledge shock. A study in the Harvard Business School has been done that the knowledge which is used in the professional life is only 15%. So whatever knowledge which you are gaining at this point of time, only 15% of this knowledge would be used in your professional life. 85% would be attitude. And when I say attitude, most people get confused. They say positive attitude is a good thing. Let me clarify you. Positive attitude does not give you any guarantee for success. Positive attitude with proper action increases the probability of success, does not guarantee you for any success. Unless you do an action, nothing is going to happen. वो कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं खिलते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाखाओं को हिलाना होगा. कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना होगा. So you will have to lit up the lamp yourself. और कोई करेगा नहीं. आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, उनकी जिम्मेवारी अब खत्म होने जा रही है और उसके बाद की जिम्मेवारी आपकी अपनी ही है. The second shock which you will have is basically the status shock. Unfortunately, in India, we have been educated by the British pattern of education. Britishers ruled us for more than 200 years. Their objective of Indian education was to make us understand English and give the answers of the questions in yes or no. They never allowed us to have a creative thinking. They wanted a battery of skilled worker to work for them. So in our education system, we are never told the financial management, we are financial literacy. Even some of the people, those who pass out from the college, they don't know how to write a check. They are not aware of any share business. They are not aware of any ITR kind of a thing. So these kind of things one has to be aware of it. And in Indian education system, I think the changes have been done in the last year is good. Some of the changes are good, but in college, what you have studied in practical life, the status would be different. When I say status, at times your boss will say, go and get the photocopy done. Go and get this file punched. So at times you feel that, am I a PN to do these kind of a thing? But these are not the things. Some of the things at the president level also I do. I take my own printout myself because there are some confidential things which have to be done. If your boss is saying something, believe in him and then move forward.
Don't have a cultural kind of a shock and do kind of internal politics that what is the thing. The third thing, basically, in Indian education system, what is there is entrepreneurship is not being taught. 95 or 98% of the students, those who pass out from the college, they only are looking for a good job. Only in the last few years, entrepreneurship has been now started, and some of the youth have started taking into the entrepreneurship. One advice to all of you is that, as I have already told you, that your grandparents gone through the phase of sacrifice, your parents have gone through the phase of compromise. You are living your own life. If you want to do any entrepreneurship, please go ahead for that. Don't look for a job. Look for entrepreneurship where you can create a job for some other people rather than it. And in creating a job, if you fail number of times, don't worry about it, because failure is not the opposite of success. Failure is the part of success. So you will have to fail number of times. And after the college, you will fail number of times in professional career. Don't think that it would be a very, very cakewalk kind of thing. The second thing in the organization, when you work, boss loves solution. You should always be responsive, not reactive. You see, we have a tendency of raising a problem, but when you go into the professional career, let me just give you an example. If the secretary of the boss is there and your internet is not working, official internet, and there isn't some urgent mail to be sent, so the secretary can go to the boss and say, "Sir, can I know that this is very important. Can I send it through my personal email ID only for this mail?" So one has to be responsive rather than reactive. The meaning of responsibility is ability to respond, not react. Reaction everyone can do, but respond no one can do. The third thing is that always promise less and deliver more. We have a tendency of promising more and delivering less. Let me just give you an example. एक secretary के पास में किसी का phone आता है, वो कहते हैं कि शर्मा जी आए तो मेरी बात कराना, तो वो कहते हैं हाँ सर शर्मा जी आएंगे, मैं आपकी बात करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और वो उसके बॉस आ जाते हैं शर्मा जी, और वो उनको मैसेज देती है कि सर गुप्ता जी का फोन आया था। वो कहते हैं ठीक है, मैं अभी बात नहीं करना चाहता, बाद में बात करूंगा। फिर गुप्ता जी दोबारा फोन करते हैं और पूछते हैं वो तो बॉस तो आ गए, आपने मेरी बात नहीं कराई। इस टाइम पर उस सेक्रेटरी का रोल ये होता है कि मैसेज पास ऑन करना है कि सर गुप्ता जी का फोन आया था, नॉट डूइंग एन ओवर कमिटमेंट कि सर वो उनको गुप्ता जी को कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं कि जब शर्मा जी आएंगे तो मैं बात कराती हूँ। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ थिंग दैट वन शुड ऑलवेज प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर. And the fourth thing in your professional career when you pass out from the college is ask for help. See, your seniors are partner. They are not your enemy. Most of the time we feel that our seniors are our enemy. नहीं, ये तो हमारा boss है, ये तो हमारे को पेलता है, ये तो ये करता है, वो करता है, ये तो बहुत हमारे को काम देता है, ये देता है. He's making you ready for the future. So always ask for the help. One bad thing which Indians or Asians have is that we don't invest on our educations after your post-graduation, and we don't ask for help. Let me be very frank with you. After you do your post-graduation, that has been taken care by your parents. How much money you invest in your own upbringing, on your own upgradation of your knowledge. I have seen people don't even spend 1,000 rupees. There are hardly people those who read books. I have a collection of more than 500 books. So always, as I have already told you, always spend money on your learning. If at all you have to spend some 5,000, 10,000 rupees on spending some money for the upskilling of your course, please go ahead for that. And ask for help. हम लोग हेल्प मांगते ही नहीं है. हम लोग वो ऐसा लगता है कि जैसे हम वो किसी से हेल्प मांगी तो मतलब हमारे लिए तो वो एक तरह से चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है. वो कोई बात नहीं होती. तो always ask for the help. And the last and the other thing is this personality. Let me just clarify the meaning of a personality, and I will define in the three alphabet ASK. Looks. You see, your looks are very, very important. And when I say looks, basically your height, color of skin and features are already pre-decided. You can't change. You can't increase your height. Amitabh Bachchan is 6 feet tall, but Salman Khan, Amir Khan and Other Khan, they're all not of 6 inches. So they know that they can't increase the height even by 1 inch. So their looks are there. So looks are basically you have to neat, clean. You have to be very smart, and you have to be having more of extra energy over it.
and actions. You see, action, when I say it, is body language. Your body language is more important than what you speak and what you write. Because when you go for an interview, your body language depicts whether you are motivated, whether you are active, whether you are energetic, whether you are enthusiastic or not. And the last W is for the words, LAW, looks, action, and words. Words are very, very important. Don't speak complex English. Always be very, very simple. And if you don't know the answer, be very frank that I don't know the answer. Let me just go and check that, rather than playing smart in front of the person who's taking an interview. And the other thing in the professional career is deadlines. At times you will be given some job to complete that job in that particular time. I know that every job cannot be completed on the scheduled time. But here one caution should call out to all of you is there. If you are not in a position to complete the job in the given deadline, please inform your seniors or superiors or team members well in advance, rather than telling them at the nick of the time that no, I have the job has not been done. Let me give you an example. If the presentation is to be done at 2 o'clock in the afternoon, and if you are not ready, you should go and tell your team or your boss that in the morning itself that I am not ready. I won't be able to do the presentation. Rather than telling the things at the neck of the time at 1:55 to your team member, no, I can't do at this point of time. So that is also very, very important. And in your professional careers, earlier the perks was that you get a car, you get a house, you get a telephone. But the meaning of the perks has been revised in this millennial contest. The P in the perks stand for participation. You should join an organization wherein you should get an opportunity to participate rather than only follow the things which someone else is telling you. And if you don't get an environment to participate, then you won't be able to grow. And the second thing is the organization which you should go, or the organization which you should create, you should make an environment so that the people love to come to office. A person is healthy is not by his 6 abs. Is a person who is treated as a healthy, is treated that if in the morning he is ready to go for his work, then he is treated as a healthy rather than sleeping into the bed for a longer period of time. So P stands for participation, E stands for environment, R stands for recognition. Every person wants a reward and recognition. A pat on his back is required. So whenever you go and join an organization, always look for a recognition, because small recognition will motivate you to move forward in your life. These are very, very important. Unfortunately, we don't get recognition within our own house. As I have already told, that we always compare with one up, and we don't get a recognition that you are. If at all a student has got 98% in Delhi University, वो बोलते हैं नहीं 98 में तो admission नहीं मिलेगा तुमको, दिल्ली कैंपस में नहीं मिलेगा, तुमने क्या 2% कम लाया, और 99 आना चाहिए था तब होगा काम. तो I think recognition बहुत जरूरी है. And in the perks, the K stand for knowledge. I have been focusing time and again that today when I say knowledge is available, learn anything, information is available in Google. Don't get confused with the Google knowledge. When I say knowledge, you should upgrade yourself, you should upgrade your learning on all the times. And the last is style. S stands for style. You should have your own style. You should always walk with the confidence that the things are there in the things and all. And the last point which I would like to say here is that after the attitude, the second important word is basically acceptance. We have to accept the situation the way we are. There is a serenity prayer says it. God grant me the serenity to accept the things which I cannot change, and courage to change the things which I can, and wisdom to know what I can and what I cannot. So at this point of time, pandemic, we are in a situation where we have to accept this situation and we have to move forward. And the other A is adaptation. Darwin theory is today also relevant, that it is not the strongest of species that survive today, nor the most intelligent one. The species that survive today are the species those who is adaptive to change. So one has to adaptive to change. And before I conclude my session, I would say that you should have a self-belief in yourself. There is always a diamond in all of us. Why we come to school and colleges is to cutting and polishing. Always have self-confidence in yourself.
वो कहते हैं इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। वी बिलीव इन दोज गॉड्स, उसमें हम आस्था होती है, पर अपने आप में आस्था रखनी बहुत जरूरी है। और लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं बोलूंगा, निपुन, इफ यू अलाउ मी, वो कहते हैं जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है। जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है। मैंने ऐसे दिल से पढ़ रहा है पैशन। जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है, और कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, जी लो तो जिंदगी है और खो दो तो यादें। Always live with a positive frame of mind, but with positive frame of mind, once again I will repeat you, always take proper action at appropriate time. Unless you take proper action at that point of time, nothing is going to change with the positive attitude. So you will be remaining there and then itself. Have self-confidence in you, and be have a gratitude, and always be thankful to God that God has given us this great body. We are fortunate that we are not physically challenged. We are all physically fit, and we can do something good for this planet, so that the generations which come after us should also enjoy the planet, rather than they feel that our predecessors have not done good to the planet, the way we are now trying to conserve the planet through the carbon or the heating kind of a thing. So we all should be positive, and we should all be thankful to God. And you believe yourself that yes, you can do anything in your life. God has given you one good thing. Before I conclude, let me just tell you, if I give you a car today, and I assume that today everyone has got a birthday, because I treat every day as a rebirth. And if I give you a car today, and you know the driving of that car, whom you will give the keys of the car? To a driver, or you will drive yourself? I know you will drive yourself. Same is the case with your body. God has given you this body, this vehicle to be driven on this earth. Please don't give the keys of this body to somebody else to drive yourself. You have to drive yourself. Be on the driving seat and drive the things what you will. Steve Jobs has said, do what you like, but love what you do. जब तक अंदर से काम करने का प्यार नहीं होगा, तब तक उसमें आपको थकावट ही महसूस होगी। जो काम आपको अच्छा लगता है वो अगर आप करते रहेंगे तो आप कभी भी थकते नहीं है। But do what you like, but love what you do, and only you will be successful in your life. I think I have taken whatever the time which was permitted to me. In case Nipun, if you want me to continue, I can still continue. Yes. Yes, sir. Yes, sir. First of all, sir, thank you so much for joining in. It is my pleasure to host for you. And, I was able to relate everything you were saying, because when I left my college and I joined my first job, I was feeling exactly what you were saying. So if I conclude this session, like if I am listening to you, I just feel we all are raw gold. We all are raw gold. And when someone senior or someone, our bosses or our seniors are giving us pressure, or life is giving us pressure, that means when there is raw gold, raw gold को जब हम melt करते हैं, तभी वो एक beautiful सा set में तैयार होता है. So we all are raw gold, and this is our time when we are getting that pressure, we are getting that heat to develop into a beautiful set. So this is one thing. Secondly, I just want to say, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. Sir, thank you so much for this thing you said, that don't be afraid of failure. So I just want to tell each and every student, never ever get अपने दिल पे मत लो failures को. Never ever get disappointed with your failures. And sir, I just loved your session. This was so motivating. I can just see the chat box. Like I'm literally, I have goosebumps. This was so amazing. I just want to ask you one question, because I had word with all the students before joining in, and I just want to ask you one question. Sir, what is your success mantra? What is your success mantra?
देखो निपुण, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने हायर सेकेंडरी करी थी 58% मार्क्स से। मैं अपने फेलियर इसलिए बताता हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि वो IIT IIM वाले ही सक्सेसफुल होते हैं, वही प्रेसिडेंट बनते हैं। आज अगर देखो, आज सुंदर पिचोई है या सत्य नडेला है, वो कोई IIT आया, वो ठीक है, वो IIT से पास है, पर सत्य नडेला भी जो है वो मणिपाल इंस्टीट्यूट से पास आउट है। तो कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने BSc करी थी, उसके बाद में मेरा को ना तो मेडिकल में एडमिशन मिला, इंजीनियरिंग मैंने करनी नहीं थी। उसके बाद लाइफ में देखिए, सक्सेस होने के लिए मैं पहले साल में फेल हुआ था। मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल 1 साल के बाद छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं था। आज भी मैं इस तरह के वेबिनार इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को ये बताया जाए कि शुरू के फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क तब पड़ता है जब आप बाउंस बैक करते हो। बाउंस बैक करने के लिए आपको खुद को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। मैंने 10 साल बजाज में जॉब करने के बाद में शिव खेरा का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने मेरे को टर्निंग पॉइंट दिया कि तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। दुनिया तो बर्थ और डेथ के बीच में तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे। और फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है पीपल मैनेजमेंट, और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चीजें, और तीसरी है प्रायोरिटी। आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच में फर्क पता होना चाहिए। देखिए, हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। अगर आपको 1 हफ्ते में एक बार ही किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो जरूरी नहीं कि आप जिम जाओ, या जरूरी नहीं है 1 घंटा आप सेव कर सकते। रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। बट अगर आप उसको वेस्ट प्रायोरिटाइज में टाइम नहीं करोगे, टाइम से नहीं करोगे, तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। तो वन लास्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज दैट पीपल मैनेजमेंट रखो। ऑलवेज डेवलप टीम अंडर यू। ये मत सोचो कि तुम जिंदगी में अकेले कर सकते हो। तुमको अगर कुछ भी करना है, टीम को डेवलप करो। और कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप दिल से जब तक बोलोगे नहीं, तब तक वो दिमाग से बातें की हुई, आज गूगल्स में आपको एक वर्ड टाइप करो, आपको हजारों पेज की डाउनलोड आ जाएगी। आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे दिल से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। सेल्स में भी या रिलेशनशिप में भी जब तक दिल का नाश्ता नहीं हो, तब तक कुछ नहीं होता है। एंड लास्ट थिंग इज दैट यू शुड बी ट्रस्टवर्दी। You should not be the best or expert, but you should be a trusted authority. If you love someone and don't trust him, it is not the true love. But if you trust someone, slowly and gradually you'll start loving that person. Be it your pet, be it your servant, be it your driver, be it your wife, be it your girlfriend. Trust is very, very important. और आज relationship में जो भी आज divorce हो रहे हैं या जो भी breakups हो रहे हैं, वो एक trust deficit है कि हम कभी भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ट्रस्ट करो तो फुल्ली ट्रस्ट करो, अदरवाइज जो है फिर वो फालतू में जो है वो, मैं वर्ड लव नहीं यूज करूंगा क्योंकि लव को भी हम बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाते हैं। लव यू कैन डू इट विद योर सिस्टर आल्सो, यू कैन मदर आल्सो, यू कैन फादर आल्सो, यू कैन। हम वो लव को लस्ट में लेके चले जाते हैं कि क्योंकि इस एज ग्रुप में हमारे को ध्यान वही जाता है, तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। तो ट्रस्ट करना चाहिए, और खुद तुम्हारे पे अगर लोग ट्रस्ट करते हैं तो तुम्हारे को खून देने के लिए हॉस्पिटल में आ जाएंगे। पर अगर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर वो व्हाट्सएप और फेसबुक के जो सारे दोस्त हैं ना आपके, 1000 जो हैं, कोई काम नहीं आएगा जिस दिन आप हॉस्पिटल में बैठे होगे और आपको वहाँ ब्लड चाहिए होगा। आप कितने लोगों को फोन कर सकते हैं कि भैया मेरे को ब्लड चाहिए, जरा आप आओगे क्या? उन्हीं लोगों को फोन कर सकते हैं जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं कि मैं इसको अगर फोन करूंगा तो ये आएगा। ये नहीं कि वो बहाना मारेगा कि मैं पानीपत जा रहा हूँ या मेरे को खुद को वायरल फीवर। I think Nipun, I normally do a session for an hour's time, but थोड़ा time मेरे को थोड़ा कम था, तो मैंने कहा जितना crisp कर दूं उतना ठीक है। But I can do another webinar in case if you want for the college students as per your. Yes sir. Because Yes, I remain at house, so I can devote time for the youth. मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो मैं लाइफ में मैंने फेलियर शुरू में सीखा था, क्योंकि मेरे को हैंड होल्ड करने वाला नहीं था कोई। आज मेरे को पता है कि अगर मैं 100 बच्चों को भी एड्रेस करता हूँ, उनमें से अगर 10 को भी फर्क पड़ जाता है तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। देखिए 100 के 100 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 100 के 100 अपने आप में इम्प्लीमेंट भी नहीं करते, अपने आप चेंज होना भी नहीं चाहते। तो अगर वो 10 को भी फर्क पड़ जाता है तो भी मेरे लिए एक अच्छा है कि भाई चलो आने वाली जनरेशन कुछ तो ठीक रास्ते पे आएंगी। डेफिनेटली सर, उन 10 बच्चों में डेफिनेटली मैं आज शामिल होना चाहूंगा, बिकॉज डेफिनेटली मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है and I was able to relate myself. So sir, I just got one question for you. Sir, जैसे कि आपने बोला कि बुक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है. So sir, I was never a guy who just used to read books, but during the lockdown period, someone suggested me to read books and I started reading books.
So can you just tell us everyone one book we all should read? देखिए, Which is your favorite? मेरे को जो इस बुक ने लाइफ को चेंज किया वो बुक थी यू कैन विन बाय शिव खेरा. You can go and read that book, and don't read that book in 2 hours time. Read that book in 1 month time. एक चैप्टर को 1 हफ्ते में पढ़ो और स्पेंड करो. बुक्स के साथ साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा, देखिए बुक पढ़ना हम लोगों को कई बार बोरिंग लगता है क्योंकि किताबों का बोझ इतना ज्यादा हमारे पे पहले थोप दिया जाता है जो कि जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉलेज नहीं होती. और बुक्स के साथ साथ मैं आपको कहूंगा आप टेड टॉक्स देखने शुरू करो. आप जोश टॉक देखिएगा. आप टेड टॉक्स में बहुत अच्छे आपको टेड टॉक्स इंटरनेशनल स्पीकर्स मिलेंगे जो, क्योंकि टेड टॉक्स जो है वो आपको 15-20 मिनट की होती है, ज्यादा होती नहीं है और टाइम स्पेन होता है. जोश टॉक्स में भी आपको, जोश टॉक में तो वो फेलियर की स्टोरीज होती हैं. टेड टॉक्स में आपको अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मिलेंगे. तो आप लिंक्डइन पे भी कई अच्छे आते हैं. देखिए आपके पास में टाइम है, आप कहाँ फोकस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना ये बहुत डिस्ट्रैक्शन वाला इंस्ट्रूमेंट हमें मिला हुआ है. इसमें आप पॉजिटिव वे में भी जा सकते हो, नेगेटिव साइड में भी जा सकते हो. तो आपको अलाउ है, आप मेरे पास में शायद तो यू कैन विन है. हाँ ये है मेरे पास. द बुक इज यू कैन विन बाय शिव खेरा. आप इसको कहीं से मंगा सकते हैं, अपना amazon.in से मंगा सकते हैं. इनकी कीमत 399 ही है. बट ये बुक मैंने कम से कम नहीं तो 1000 बुक्स अपनी लोगों को अपने आप खरीद के अपनी टीम को बांटी हुई है, क्योंकि मेरे को इस बुक ने इंस्पायर किया था. पर अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जो बुक लिख रहा हूँ विच इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यू कैन विन. मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, उस 40 साल के एक्सपीरियंस को और जितनी मैंने 500 किताबें पढ़ी हैं, उन 500 किताबों का निचोड़ बना के मैं अभी एक बुक लिख रहा हूँ जो कि मार्च या अप्रैल में जो वर्ल्ड बुक फेयर लगेगा दिल्ली में प्रगति मैदान में, उसमें वो लॉन्च होगी. मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छी बुक होगी. मेरा मानना है कि जो आपके जैसे लोग हैं, क्योंकि मैं 20 से 35 साल के लोगों को ही समझा सकता हूँ, क्योंकि 35 साल के ऊपर वाले समझते नहीं है, वो कुछ अलग सी जिंदगी में चले आते हैं, उनका फिर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो जाता है. उनको अगर मैं कुछ समझा सकूं या कुछ अपनी फेलियर्स शेयर कर सकूं, इसमें स्टोरीज भी मैंने शेयर करी है, कुछ अपने लाइफ इंसिडेंट भी स्टोरी करी है, अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर करी है, तो वो बुक एक आएगी जिसका नाम है रीसेट योर लाइफ. तो वो मेरा लिंक्डइन पे जो लोग मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं वो हो सकते हैं लिंक्डइन. एंड बाकी So I would request everyone to follow sir on LinkedIn. Secondly, sir, before you leave, I just want to thank you on behalf of the whole college. We just loved your session, and we just promise you that you will see future entrepreneurs from us in the next 10 years. So, sir, before you leave, I just want everyone to, on their camera, and we just have to take a selfie, like a screenshot, a snapshot, because we are not. In the meantime, मैं बोल दूं, वो कहते हैं बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, ये जिंदगी जंग है, जंग को जारी रखिए. कितने दिन जिए इसका ना हिसाब रखिए, किस तरह जिए इसकी खुमारी रखिए. हाउ यू लिव विल मेक ए मैटर. कितने साल जियोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जिंदगी को अपने हिसाब से जियो. लिव लाइक ए किंग साइज. Amazing, amazing. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. Amazing, amazing. Thank you so much, Anil Bhasin sir. But before you leave, ladies and gentlemen, please अपने कैमरा को सब ऑन कर दीजिए, and I just want a good selfie before sir leaves. Okay, are you guys ready? Okay, in 3. Okay, we will use V for victory. If you are ready. In 3, 2, 1. Okay, once more. In 3, 2, 1. Thank you so much, sir, for having us on board with you. And now I will request sir to join the breakout room before he leaves. And ladies and gentlemen, I just want everyone to be ready for the next speaker. I am so overwhelmed. I'm so happy that Mr. Anil Bhasin sir was with us, and I'm like genuinely motivated. How many of you are genuinely motivated? Can I see some hands? Can I see some hands? Wow. I can see some hands. Wow. A lot of hands now. Look, I am genuinely motivated. I just genuinely want to say, जो चीजें उन्होंने कही
what genuinely I can feel it because I have been through that. So the next speaker coming up right away for us is Mr. Raj Das, who is the CEO and co-founder of HiRec, global co-founder and Indian CEO of HiRec India. He's leading a team of 100 plus diverse professionals to achieve the vision of HiRec. I am overwhelmed and I just want to welcome Mr. Raj Das, the global co-founder and Indian CEO of HiRec. Ladies and gentlemen, please give it a round of applause for Mr. Raj Das. Good morning, sir. How are you? Hi, I'm good. Good morning, sir. Good afternoon, in fact. Okay, it's 12. It's almost 12. So good afternoon, sir. How are you, sir? I'm all good. I just recovered from COVID and I'm really excited to interact with you all. And if I can add any value to your life. Definitely, sir. I just want to, tell you that everyone is excited. Ladies and gentlemen, I know you all are excited. Please give a hands up for Mr. Raj Das to show him that how excited we are for this session. Hands up. Everyone. Sir, see. Sir, you can just check the chat room. People are just going crazy for you because everyone is waiting to be motivated, and if they can learn something from you, it will be great for them and great for me as well. So, sir, over to you. Sure. So I'm so pleased to see so many of participants joining and taking this Indian startup culture forward. And in next 30 to 40 minutes, so my job is to share you my experience and make sure you learn at least one thing from my experience. So first, I will briefly share you my journey, okay? And later on, you can ask any questions you want, and I will try to answer my best. So my journey starts from, so I do have a very humble background, and I'm sure it will motivate all of you. So I come from a very remote village in the district of Goalpara from Assam. And my family, like I am the only graduate from my family. My parents never went to school. My parents can't even put signature. So that is the background. I grew up without electricity connection at my home. And then luckily I went to Jawahar Navodaya Vidyalaya. So you must have heard of it. So Jawahar Navodaya Vidyalaya, it's I would say it's the best government school for the middle class family. And I studied till 10th class there. And then after 10th class, so in class 10, I secured 10 CGPA out of 10. And then I wanted to join IIT, but my family wasn't economically stable to fund my IIT JEE coaching. Then I appeared for a nationwide exam, which is JNBST, Dakshana, and I cracked that exam. So, and they funded my IIT JEE scholarship coaching. Then I went to IIT Bombay. So like most of you, when I was in college, until my third year, I had no clue what I will do after graduation. So I tried doing so many things. I tried doing marketing. I tried doing research, like chemical research. And in the final year, it became very clear to me that, okay, it is the startup that I should be doing. So for first 3 years, I was clueless. I didn't know what I should be doing after graduation. In the fourth year, it became clear that I should be starting up. So when I graduated, so I had an offer from big company since I was interested in a startup. So I joined a startup which was backed by Xiaomi and Alibaba. And I joined this startup as a product manager. And as a product manager, I have built more than 6 to 7 mobile apps. And
all of them acquired more than 100 million users in India. So out of those 6-7 apps, only 1 or 2 of them become successful, making net positive profits, and others failed. So I do have learned from my failures as well as success. So one of the most important learnings I have from my professional experience is, when you start up, do not chase numbers. Okay, try to add more values to the customers. So when you are in the early stage, focus on adding more value proposition to your end customers rather than just increasing the numbers. So that is the main learning, and I can give you some examples. So I worked on app like Rosebus, Rosethan, Vuilike. Okay, and these apps acquired more than 20 million downloads within a year. Okay, more than 1 million DAU, more than 1 million DAU within 6 months. But after 2 years, it failed because we failed to monetize. And we failed to monetize because we didn't focus on adding more value propositions to our end customers. We focused on just increasing the numbers. So that is the top learning. Like, if you want to do a startup in the early stage, do not chase numbers. Try to focus on adding more value proposition to your end customers. So so after working for a couple of years as a product manager, so it was in like Feb or March of 2020. So when I was doing a full-time job as a product manager, I was also starting up. Okay, so side by side, I was also building my own company. And the number one problem I faced is building a team for my startup, right? So because it was a new company, nobody knew it. So people didn't used to, like, it's very, very hard to hire good people for my team in my startup. So that is a challenge I faced, like hiring for a least known business or a startup is really difficult. And my second observation, since I worked in 2 early stage startups, so I saw my HR used to take more than 1 month to hire that one engineer for my team. So in short, hiring, so the observation I had is hiring is a big challenge for a startups, for a small companies or business. And that is what gave, that is the basis of ideation of Hirect. Okay, so the ideation of Hirect is based on my personal experience. My personal experience is what I said, like I observed my HR is struggling to hire for my team. And as a founder of my startup, I also struggle to hire people for my team. Second, we did industry research. So first one is the personal experience. Second is industry research. So when we did industry research of the recruitment industry, we found this, like all the job portals, they are all same. Okay, so they are driven by manpower, not tech innovation. So most of the traditional hiring platforms are still web centric. So in last 10 years, you see people have shifted from laptop to mobile. So mobile adoption is much higher than the laptop adoption. Then in traditional job portals, you will see a lot of consultants are hiring, a lot of middlemen doing spamming, scamming. There is no proper verification of recruiters. Anybody can become recruiter. So we found a lot of inefficiencies in the traditional hiring, which we wanted to solve through Hirect. And third point for ideation of Hirect is
when is the right time to launch a new business in the market. So in pandemic, millions of us lost the job, and we believed the economy will recover and these millions of people will come back to job, and that is the right time for us to introduce a new hiring app or job search app. So the ideation of HireAct. So the summary is the ideation of HireAct is based on 3 points. Number one, my personal experience, what myself faced, what I observed others facing. Second is the industry research. Third is when is the right time to launch. Okay, so now I can tell you more about HireAct, what we exactly do at HireAct. So my approach, like this is an approach I use, and I recommend all of you to use this approach. And the approach is, before you come up, like before you design a solution, design your problem. Okay, so first find Sir, I just want to say that I think you are on mute now. Can you just unmute yourself? Yeah, sorry. Yeah, no problem. No problem, sir. So what I was saying, so it's very important for you to define your problem very constructively before you start working on the solution. And I can tell you the problems we are solving at HireAct. So first I will tell you the list of problems that we are solving. Then we will tell you the solutions. So the first problem, as I told, is we are not solving the hiring needs of big companies. We are solving the hiring needs of startups, smaller companies. That is one problem we are solving. Second problem we are solving is the scam. Okay, so scam is happening because anybody is able to become a recruiter. Third problem is spam. Spamming is happening because job seeker and recruiter are not matched properly, and the ratio of job seeker and recruiter is not properly balanced. So in Indian economy, you will see there are around 40 to 50 job seekers for each job. Then of course the spamming will happen. So if you have a platform where there are 100 recruiters and 10,000 job seekers, then of course the recruiter will be spammed. Okay, so the three main problems are, we are solving the hiring needs of startups. Second is scam. Third is spam. Fourth is privacy concern. Okay, so in on other platforms, as soon as you create a profile, your phone number, resume are exposed. Now anybody can call you randomly. So your resume, your phone number, your email ID, your address should be well protected. It shouldn't be exposed to anybody. So that is again a problem we are solving. And fifth problem we are solving is the efficiency. So let's say you look for a job on other platform and there are 100 jobs recommended to you. You go through all the 100 jobs, you will find only three or four of them are relevant to you. Others are not relevant to you. So now we have a list of these 5 problems, and I will tell you how we are solving those problems. So the most important thing to learn here is, so you can see how clearly, like all our problem statements are clearly defined, right? I have defined 5 problem statements that we will be solving at HireAct. And now you can also think of solutions. So finding a solution is easy, right? Defining the right problem to solve is difficult. So now let's say, like, how can we solve the first problem? Hiring for a startup, right? So that is easy to solve, and it can be solved
by product design. Like you design the product in such a way where the startup recruiters can connect more. Like it should be based on, it can be based on ESOP, right? It can be based on like rounds of funding you have, number of employees you have. And most importantly, this problem can also be solved through marketing, right? So nowadays, many people are still preferring to work in a big companies rather than startups. The reason is they are just 20, 22 years old. They don't know the benefits of working in a startup. So our job is to do marketing, educate our youngsters, telling them what are the benefits of working in a startup, right? So that is the solution for first problem. Now the second problem is scam. How can we build a platform which will be scam free? The solution is you don't allow anybody to become a recruiter, right? So at HiREC, we do have a strict verification of recruiters. We allow only the decision makers of the company to become a recruiter. We don't allow any middlemen. We don't allow any third parties to hire for somebody else. And so it's just a set of document verification where we ensure the people hiring are legit people. They are the right people. When you have the right people as a recruiter, there will be no scam. And now coming to the third problem, how we solve spam. So as I said, the spam is happening because of the bad or imbalance ratio between job seeker and recruiter. So at HiREC, we try to keep a ratio of 1:5, like 1 recruiter, 5 job seeker. Second, we distribute job seekers and recruiters. So we use algorithm. We use like a very new age algorithm, just like TikTok, to match a recruiter with job seeker, which can reduce spamming, right? So now let's say you are looking for a product manager job and you are recommended with jobs from marketing, business analysis, design and all. So then of course spamming will happen. So the solution is to recommend you a feed which is more personalized to you. Okay, so in short, the spam problem can be solved by maintaining a good ratio between job seeker and recruiter and building a good algorithm. The fourth problem we are solving is privacy. So at HiREC, let's say you create a profile. Okay, so now your phone number, email ID, resume cannot be accessed by anyone without your permission. If somebody wants to access your phone number or resume, they will request you, you accept their request, then only they will be able to access. So we solve the problem of privacy. Fifth is the irrelevancy, right? Irrelevancy and also the response rate. So this is a problem which can be solved by technology only. Okay, so as I said, a modern age algorithm, if it can match a job properly with the profile, it can solve the problem. And so as a company, our moat, so you know moat, right? MOAT. Yeah. So our moat is that algorithm, because the algorithm can solve n number of problems. First is it can recommend you a list of matching jobs or candidates, right, which will solve so many problems in the process. Second, it can easily pick who are good recruiters, who are good job seekers. So we can track the behaviors of what they are doing on HiREC. So let's say if there is a recruiter who doesn't reply job seeker, so algorithm can detect that, okay, this is a recruiter who is not replying in his job seeker. So we will not recommend him to anybody, right?
So that algorithm can solve a number of problems, and it can make the efficiency of hiring and job search by multiples. Okay, so in summary, what I wanted to tell is, before you design it, like finding a solution is easier than defining your problem statement. I have just shown you how we define the problems and how we solved them. So a startup building a product, like a startup is all about finding a problem which is faced by mass number of people and solving it. And when you are solving it, make sure it has economic outcome as well as social outcome. Okay. So your startup, so there are 4 key points. Your startup should always be having a problem statement. Okay. And that problem should be faced by a mass number of people. So if that problem is just faced by very less number of people, so you will not see growth in your company. Okay, so first is find a problem which is faced by a mass number of people. And then, like, if you can define your problem very clearly, solution is easy. Okay, and second point is, do not build a startup just to make money. Okay, so every startup should have contribution to economic part as well as social part. Okay, so it should have economic impact as well as social impact. Okay, so let's say Tesla. So you never saw Tesla promoting its product. They are always like, they are never promoting the economic aspect of Tesla. They are always promoting the social aspect of Tesla, right? So Tesla, like electric car, can save you from environment pollution. So that is a social part of Tesla. And when you build a startup, when you build a business which has good social impact, your growth, your marketing become very easy. Okay, so now you can find out what are the social aspects of Hirect. The social aspects of Hirect is, we don't allow third parties, middlemen, to become recruiter. Okay, so you know, like in a startups, numbers matter a lot, but हमने numbers sacrifice किया, and we made sure we don't allow any middleman to become a recruiter. So this is a social problem we are solving. So you can imagine you are searching for a job and किसी ने scam कर लिया. You ended up paying 20,000-30,000 rupees to a scammer. So that is a social problem, right? So scamming is a social problem we are solving, and we are okay. इसके वजह से हमारे data थोड़ा कम होंगे. We are okay with that because we are solving a social problem of scams. Okay, and so far now I can briefly tell you the success we have achieved in Hirect in last 1.5 years. So as of now, we have acquired around 5 million downloads in less than 1.5 years. We have more than 50,000 verified recruiters. Okay, and 20 to 30,000 of them are hiring every month. And we have around more than 2 million verified job seekers. We are currently operating in India as well as in US. And now we are a team of 250 people in India, and we are a team of around 50 to 60 people in US. So that's the brief about my journey. That's the brief about Hirect. Now I am open to answer any of your questions. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. Raj Das. And 3 cheers for Hirect. Hip hip. Hip hip. Hooray! Hooray! Yes. Hooray! Trust me, this was so motivational. Trust me. And I just
I was just connected to you. I just when you said start work in a startup rather than a big company. I have worked in a big company also, and now currently I'm working in a startup, and I just feel it that when you work in a startup, you start working from the roots. You are able to get connected, and you learn the work from scratch. So you are an inspiration for us, and I personally feel that you have encouraged us all. I was just going through the comments while you were giving your speech. I was just loved with the comments. You can just see in the chat box, people are so excited, and people are just saying, when you said 5 million downloads, that is a number. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. Ramdas. And we all at Lady Urban College salute you and salute your spirit, because genuinely, I'm just genuinely telling you, this is something massive. And next time, I just feel, आपसे मुझे बताओ, शार्क टैंक में अगला जज मिस्टर राजदास जी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Of course, Nipun, होना चाहिए. Definitely. I just want share this clip on Instagram. Okay. We have a lot of people tag Shark Tank, and I just want Mr. Rajdas next year on the Shark Tank panel. Okay. And I want one of us to go as a contestant. Okay. So thank you so much, sir. Trust me, we all are so happy and so motivated by your speech. We just loved it. So, sir, before you leave, I just want we all should take a selfie before you leave. And after that, I'll request the core team to take Mr. Rajdas sir to the breakout room. But before that, I just want a good selfie, a good smiling selfie, because his struggle is, at that time that was a struggle, but at this time, this is success. Because he's sharing our story with us, and I genuinely feel motivated. Do you guys feel motivated? Yes or no? Unmute yourself and tell us. Yes, Yes. Definitely. Are you guys, yeah. Yes. Are you guys ready for the selfie? Of course, Okay. yes. And keep your hands up so that we all can feel that you guys are excited. I just mentioned that this is a virtual event. This is not an offline event. तो राजदास सर, आप क्या एक्शन करने वाले हैं? आई थिंक ये करना चाहिए इस बारी, बिकॉज ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, इस पे मुझे विक्ट्री नहीं, इसमें मुझे ये दिख रहा है, बिकॉज आई थिंक हायरेक्ट genuinely rocks. So ladies and gentlemen, do this and get ready for a selfie. Okay, in 3, 2, 1, say cheese. Once more, 3, 2, 1. Thank you so much. Thank you so much, Rajdas sir. We will genuinely follow you on your Instagram and your LinkedIn for more updates, because we genuinely want motivation from you every time. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks for having me, and I'm excited to join you again next year and add more values if I can. Definitely. Thanks a Definitely. lot. So next year, moderator Nipun Nizaman and speaker Rajdas done. Abhi se, ठीक है? All right. Thanks a Okay, lot. done. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, how are you guys? Are you guys enjoying? And sir, please, I request the core team to take sir to the breakout room. And are you guys ready? Are you guys enjoying? I just want a heads up. Are you guys enjoying? अब मैं आपको चीज बता रहा हूँ. जब when we started this event, we were playing a game called dialogue game. I was delivering dialogues, and you people were telling me कि ये डायलॉग किसने बोला है. तो मैंने 2 डायलॉग बोले थे. पहला डायलॉग, हमारी छुरियां छोरों से कम है क्या? मुझे शोर मचा दिखाओ अभी, क्या फटाफट. Unmute yourself in 3, 2, 1. Dangal. दंगल I said आमिर खान ने बोला था. I said मुझे शोर मचा के दिखाओ. I said मुझे शोर मचा के दिखाओ. In 3, 2, 1. Are you guys ready? Please make some noise. Yes. दंगल. Second dialogue जो मैंने बोला था, मैं अपनी favorite हूँ. ठीक है. The next speaker which is coming away right away for us, I think she is her favorite.
and I'm most excited for her because I cannot wait she to join us. You know, she's an Indian model and a beauty pageant title holder who was crowned Miss Femina India 2014. She came to attention at the age of 15 during MTV Teen Diva. Wow. At the age of 21, she represented India in Miss World 2014, held in London, and ended up in the top 10. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Koyal Rana. Yes, are we able to see Koyal Rana? I can see the chat box. So excited. Who is excited for Koyal Rana? Who all are excited for Koyal Rana? Who all? Just tell me. Just tell me. And just tell me who all wanted to be Miss India, or who all wants to be Miss India now? Are there any people in the chat room to Miss India, Miss World बनना चाहते हैं? I'll definitely contact Koyal Rana and मैं आप दोनों का एक सेशन करवाऊंगा. फटाफट बताओ मुझे. Till the time she joins, no one wants to be Koyal Rana. No one wants to be, Miss India. Unmute yourself and tell me. Okay, Yash Garg wants to be Miss India. Wow, Yash Garg, Mr. India बनेगा Yash Garg. और ये Mr. India ये सच में भी इसने अपने आप को कैमरा भी हाइड किया हुआ है. हमें दिख नहीं रहा है. He is genuinely Mr. India. So just give me a second. I'm just giving you an update, quick update. Okay, so ladies and gentlemen, she is here, and I'll say again, आराम से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. फिर से सुनना. She is an Indian model and beauty pageant title holder who was crowned Femina Miss India 2014. She came to attention at the age of 15 during MTV Teen Diva. Wow, this is genuinely amazing. At the age of 15, she did MTV Teen India. जब हम अपने घर में बैठ के पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं. At the age of 21, she represented India in Miss World 2014, held in London. So, ladies and gentlemen, please give a round of applause for Ms. Koyal Rana. You can see the camera. People are saying Queen is here. And I think Queen is genuinely here. And Queen is here. So, good afternoon, Queen. How are you? Good afternoon. I am very well, thank you. How are all of you doing? Everyone is doing fine. Everyone is doing fine, and you can see the chat box. People are, going crazy for you. I even started at 11, and from then I am seeing we are waiting for Koyal Rana, we are waiting for the Queen, we are waiting for Koyal Rana, and see, oh my God, beauty, welcome, ma'am. Queen is in the house, and I just feel that Queen is in the house, and Queen will give us definitely some good advices to be, to be Miss India in the future, or to be successful in future. So my first question to you is very simple. How does it feel to be Miss India? It feels amazing. Being Miss India is great. I think it's about also responsibility. So it's a balance that one has to maintain, not let it get to your head, and also enjoy life, right? For today, I honestly wanted to talk about 3 things. My Miss India journey, as you already have asked me about it. Fame and success, since that is something that I get asked about a lot. And then finally, my advice to the youth for their self-identity, which is what helps students or anybody in life to be successful. Okay. And then maybe finally, if we have time, we can work on, or maybe we could have like a small activity on meditation. Okay.
is it possible if I can, I don't know, I have, okay, now I can see all of you. Lovely. Yes. Nipun. So you were the one who was Yes. So can you? introducing me? Yes. So I was Hi. the one who Thank was you. That introducing was you. very lovely. So, ladies and gentlemen, first, I just want to, I just want everyone to clap for Miss Kulrana because now she can see us. So, ladies and gentlemen, please unmute yourself and clap. Very funny. Okay, so my next question to you is, I am very excited for this question, and after that, I want you to give a session. But okay. this question is, yeah. So, what is your definition of an achiever? Well, I would come to that. But before that, I think being an achiever, you have to understand what success is and what makes a person happy in life. Because when you're happy is when you're actually an achiever. This is suddenly a question I'll just form an answer in some time. So my motto for today's session is whatever happens, happens. Because I am not perfect at giving speeches, but I am learning and I keep improving myself. And I keep doing it because it makes my heart beat really fast. And I understand that I can't be, at least I can have that courage to be bad at something that everyone can't be good at. And right. So I did not prepare much for this talk, but I have like a few anecdotes that I would like to share from my life, which will make you understand a little bit about where you are in life and why you are the way you are and what you can do to maneuver from that and go into a zone where you understand life as well as you understand yourself. Why I participated in Miss India was I had this urge to be unconventional. I wanted to not be conformed by society of what my role is when I grow up. I was asked this question in my finale when what is it that you learned from your fellow contestants? And if I did answer that, but if I could re-answer that question, because I wasn't as self-aware as I am today, I was, but not as much. I would say, well, what I learned, the one thing that I learned from all those people, all those girls who were with me, was how we all are so alike, that we all were there to challenge the norms of the society, of what it meant to be a woman in society. Yes, there are many other platforms, but how we all chose this particular platform to express our sense of empowerment. And that is what made us so alike. And I think that was my first step to creating a life that I never heard of, or that was not very common in people around me. Like when people around me wanted to get a job, I went to participate in Miss India. Then suddenly, when everybody around me wanted to be into films, make films, I left that part and went on to travel. When that became the norm, I decided to start get into entrepreneurship or become an entrepreneur, start my own business. But the one thing that always stayed constant was the fact that I always wanted to be a teacher. I loved teaching. I think that was my first desire in life. My first, when I hadn't been touched by the world, is the thing that I wanted to do. I was, I think, in first standard when I started teaching. Sometimes normal, sometimes real kids, sometimes imaginary kids. So I was in my
room would be like writing on my almirah. So my parents started buying me blackboards and chalks and whiteboards and all those things. So I think they were proud, but instead of buying games and toys. And then one day I asked them, I was really disappointed. So these are like small anecdotes, and I'm going to reach a point where you would understand how school or even our family influences our self-identity. There was a time when I think I was probably in 3rd standard when a few kids had, or like elder kids had come to our school to talk about just what we wanted to do when we grew up, and they started asking us, giving us different options. And so the moment they said teacher, I raised my hand quickly, and that very same moment, in that same breath, I put it down because everyone else around me were like, "Ew, no!" And I couldn't understand what had just happened. Why was everybody so against the idea of becoming a teacher? Now, I pushed back to class 5th. So I went back home and I asked my parents, okay, what do I become then? And they said, oh, whatever you want. Not really. They probably said, I don't know. But I think we had a conversation and I came up with the answer, or my dad first told me that, why don't you become an IAS officer? So I had no idea what that was, but I was very proud that I finally knew what I wanted to be. And I think we were in 5th grade when all of us were supposed to come, and our teacher asked us if to come one by one on one by one to the front and talk about what is it that we wanted to become. Wow, everybody in my class knew what they wanted to become, and everybody wanted to become a doctor. I was in a girls' school, so I had never heard the term engineer till college, and I was really confused because I was like, what is this brochure that I have not been given and everybody knows about? Or what are these doctors in these girls' lives that they really aspire to become a doctor? So I realized that how in our home this conditioning is done on what a successful career is about, and how everybody is forced to become, or instead of them realizing what they want to do in life, they're told from their peers or like around. So suddenly how I became very anti of becoming a teacher, because everybody around me was thinking of that as a very or like a very not a very a job that you would want to do or anybody respects. And such conditioning doesn't only happen in your home or with your peers, but also happens in school, because a school is not really teaching you about money or how to make money. They're talking about, or they want to pump out good employees who would listen to the employers and do what they're told to do, because the school kills your sense of identity. They kill your sense of self, so that when you don't know who you are, or you don't know what your interest is, then you end up doing what others are telling you to do. And so how in school they tell you not to make mistakes. So you come out of school very scared to make a mistake. They tell you to shut down and stop talking. They criticize and punish your self-expression. So when you have hidden yourself from the people, and when your behavior, your personality is criticized in the society, you start adapting or reshaping yourself to become someone that you feel is more adaptable to the people. And while you're hiding your real self from the other people, you start hiding it from yourself also, because you've put so many layers and layers of things you've heard from around you over it. Now, so the basic human nature is self-interest. Yes, culture has made you become more cooperative, to
so that it's in the benefit of the tribe. You're more safe and you can cooperate better with people around you. But deep down, we all are motivated by self-interest. So if we are so self-interest motivated, then why aren't we doing things that are in our interest? So why aren't we able to identify what interests us so much? Is because we don't know what our self-identity is. We haven't really worked hard towards understanding who we are, what motivates us, what inspires us, what our likes and dislikes are, what our personality traits are. It's only when you work on yourself. Achievers, right? Who are these achievers, these successful people? These are people who know who they are. They work very hard every day to learn and grow. They enjoy learning and growing. They do periodical assessments on themselves throughout their lives because they're always improving. I have never been bothered by fame or success. I love what I do. I am where I am today because I've always been happy with where I am. I have been diverting paths, making new lives, some lives that I've not, just creating my own path every day and learning and improving, reading books, listening to podcasts. And this is what makes you more self-aware, makes you more understanding of who you are and understanding where. And if you the other way that you can start understanding is meditation. Now, when you do meditation, there are two ways that you can go about it. First is you sit down and you think about a problem, and your thoughts keep coming and you feel, okay, this is a thought that I really need to figure out, or whatever is bothering you, start talking about those things in your meditation. Now, what happens in that is that will not make you a very viable person, because every time you're faced with a problem, you'll go and sit down in meditation to find out the answer, to find out everything. What meditation is about focusing on one thing. It could be a point, it could be your breathing, it could be any one object of your thought. And when you do that, you become a walking, talking, contemplating human being. So the problems that you face in your daily life, you don't have to go back to sit in the meditation, but you will be able to solve that problem in that very moment. Now, one more thing. They tell you in school that you can't make mistakes, that there's only one answer, one right answer. Whenever we're asked the question in school, if we don't give the right answer, they shun us down because they criticize or whatever. But if you realize the one thing that makes all us humans special is the fact that we have this ability to produce results in many ways, to find an answer through so many ways, right? And that is what sets us apart from all the other animal kingdom. The fact that we can be creative in finding a solution, we can adapt to many roles depending on the situation at hand. So when we know who we are, why are we focusing on the one path that has been set? Why can't we reach that goal using many, many methods, using our experiences and knowledge of the world? I think that sums up what I really wanted to say. This is amazing. This is amazing. I genuinely want to thank you, and I want a good round of applause for Koel Rana. Ladies and gentlemen, please. Yourself. Thank you. So I personally think three things from this, which I learned. First is never give up. Second is think out of the box. And third is age never matters. She was the person at the age of 15, she did MTV Teen Diva. At the age of 21, she represented India in Miss World 2014. That is great. That is great. You know, age को हमें कभी अपने रास्ते पे नहीं आना चाहिए कि हम छोटे हैं बड़े हैं. You should just work hard, and you can learn a lot of things from her. I genuinely feel very happy that you are here to guide us all. And I have just one question for you. As you know, we have around 350 participants here, and I think 300 people from the group today are from college, and they are just living their college life. So can you just share any of your college experience, which motivated you, or some fun fact about your college life?
if that is comfortable. Well, I think college is a place where you actually where you get lost and you really have to find yourself the most, because you have so many distractions when you reach a point where you have this newfound freedom, and that's where you can change the game, really not get distracted. You have fun as much as you can, but remember your values, remember your that's the, I think, the word of wisdom or advice that I can give. Just be yourself and don't be afraid, don't be scared, ask for help, cooperate. Because another thing, like when we're growing up, we're taught to take the test by ourselves, we're taught to do our homeworks by ourselves, and that is very anti-entrepreneurship, because when you're becoming an entrepreneur, you have to know how to cooperate, you have to know how to ask people for help. But we haven't learned all those things in our early growing age. So I think college is a platform where you can actually do that. You learn how to cooperate, how to ask for help, how to be with humans, how to create teams, how to work in unison and create a synergy. Yes, definitely. So college life is a life where you can get the most of the exposure. And ये time कभी वापस नहीं आएगा यार. So just enjoy your college life. But एक ऐसी चीज सीखो कॉलेज में जो आपको पूरे लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी. And genuinely, I thank you, Koel Rana, for giving us a wonderful speech and motivating us. Before you go, I just want a good selfie, and I just want a good selfie because you are a celebrity, and अगर हम आपके साथ selfie नहीं लेंगे आज तो हमें बहुत बुरा लगेगा. So I just want everyone to switch on your camera and let's take a selfie with Koel Rana. Ladies and gentlemen, come on. I will do thumbs up this time. So if you want to do thumbs up, you can do it, because Koel gave me that motivation that age is not a number and never give up. So I just want thumbs up for it. Okay, ready? In 3, 2, 1. Let's do it once again. 3, 2, 1. Wow. Ladies and gentlemen, please give it up for Koel Rana. And I just want the core team to guide Ms. Koel Rana towards the breakout area. Thank you so much for having us. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I hope you guys are having a good time. We are done with 3 speakers, and I think this time enough. Motivation is enough. बहुत motivation हो गया यार. अब मुझे चाहिए entertainment. आप मेरे से राजी हैं कि नहीं? आपको चाहिए entertainment अब? मुझे तो entertainment चाहिए भाई. बहुत ज़्यादा मैं entertainment के लिए अब वो कर रहा हूँ. मुझे entertainment लाना है. बहुत ज़्यादा motivation हो गई. Motivation बहुत ज़्यादा आ गई. अब पता है कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर वो हो जाता है. मतलब समझ रहे हो? Motivation ज़्यादा हो जाएगी तो हम lethargic हो जाएंगे ज़्यादा. Now I want entertainment. Ashima, do we have something for entertainment here? We have planned everything for you guys. We have each and every package. I will tell you what is there for entertainment. That is my work, but I just want to thank Ashima for organizing such a beautiful event and the whole core team. I cannot name everyone, but genuinely, I just want to thank the whole core team of DDM College. I just want to thank you all. So अब एंटरटेनमेंट से मुझे याद आया, मैं कल इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है मैंने उनको देखे इंस्टाग्राम पे. मतलब मुझे मजा आ गया यार. क्या गाने हैं, क्या सूदिंग क्या सूदिंग वॉइस है यार. मतलब नॉट जस्ट वेट. मैं तो बस अपने फोन पे ऐसे फ्लैशलाइट ऑन करने वाला हूँ और ये करने वाला हूँ. ओके, इंस्टाग्राम से याद आया, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज निपुण निशावन. ठीक है, पुट माय स्टोरीज, थोड़ा मुझे भी फेमस करो. Okay, so the next speaker coming up right away for us is the multi-talented, the super talented. Oh wow! You can see. The next speaker coming up right away for us is Miss Smriti Thakur. She is a singer and she will kill it today. Ladies and gentlemen, please give it a round of applause for Smriti Thakur. Happen, everyone. Hi guys, how are you? Hi Smriti, how are you? I am great. How are you? Thank you for having me. It means a lot. I am great too, and we all are waiting because we have had our motivation session
And now we just want some good entertainment, and we just want to enjoy our songs. And I want everyone to ऐसे flashlight on करो जब when you feel that yes, that is the moment, and we'll do like this, okay? And next time, That would be lovely. Ashima is promising me that COVID पक्का खत्म होने वाला है, and next year हम जब offline fest करेंगे तो पूरे ऑडी की lights off करके ये flashlight होगा. Done? That sounds lovely. Done, deal? same. Done, see. So Smriti, are you ready? Yes, I am. Okay, ladies and gentlemen, we have Smriti Thakur for you. Let's give a round of applause. So I'm gonna start singing. This is my uke, and I'm gonna use it and sing some beautiful songs for you. सोचा कहा था कि जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये तो उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, ये हो चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाबू रे, क्यों ना हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचाने रहोगे परे, चल भटक लेना बाबू रे, टिमटी बातें निगाहों में, सरसराती हवाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बाबरे, हाँ ना 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 ना, चल भटक लेना बाबरे, Next one is called Sham. A lot of you guys are aware of the song. So I would really like it if you guys join me. शाम भी कोई जैसे लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है, कहीं ना कहीं जागे हुए है कोई यार सो, कहीं ना कहीं खोए हुए से हम और तो, कि बुम 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 पारा पारा रखा मुझे तुमने, कि बुम 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 पारा पारा हमद होश दोनों, कि गुमसुम से है फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम से है फिजाएं, है ना सुहानी सुहानी है ये कहानी, जो खामोशी सुनाती है, जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा, मुझे वो बताती है, मैं मगन हूँ पर न जानू आने वाला है वो पल, धीरे धीरे हौले हौले खुलेगा दिल का ये कमल, कि बुम 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 पारा
रहते सुनते हैं निगाहें गुमसुम से है फिजाएं है ना. Thank you. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Smriti Thakur. Unmute yourself. मुझे हर बार बोलना पड़ रहा है. Unmute yourself. Yes. Wow. That was amazing. That was genuinely amazing. So soothing. I'm just going through the chat box. Everyone was so happy with your performance because we have had our motivational का dose. और वो motivational का dose बहुत सर पे जा रहा था. We just wanted something soothing and I just loved it. If someone mentioned, if आपने किसी ने मुझे देखा, मैं lights अपनी off करी and I had my flashlight on and I was enjoying. I just loved it. So before you go, I just want anyone from the from the chat box, anyone, do you want to ask Smriti a question? I don't want to ask a question, but I have a demand. Can you please sing Tum Ho? I had heard you on your reel and I literally loved it. Yeah. I also had one demand, but Tum Ho is my absolute favorite. So same. I am. But let's do one thing. अगर आप अपनी लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा. प्लीज करके देखो, बहुत मजा आएगा. इन 3, 2, 1 हम पहले अपनी लाइट्स ऑफ करेंगे, फिर हम अपना फ्लैश लाइट ऑन करेंगे. एंड स्मृति प्लीज, आप तो इतनी सुरीली आवाज हम आपको जाने ही ना दे, आप यहीं रुक जाओ. मैं कह रहा हूँ यहीं रुक जाओ, हम सुनते रहेंगे आपको. तो सारे अपनी फ्लैश लाइट ऑन करो, सारे, एवरीवन कम ऑन. वाओ, जो फोन से लॉग्ड इन है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें देखो. एंड लाइट्स ऑफ करो. वाओ, let's do this now. Okay. तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो, तुम यूं जितना महसूस करूं तुमको, उतना ही पा भी लूं. तुम हो मेरे लिए हो, तुम यूं खुद को गया तुमको मैं जीता हूँ. Thank you. Wow, amazing. Genuinely so soothing, so amazing. I just loved it. Do you guys loved it? If yes, tell her, clap. Wow, amazing. Smriti, your voice is so soothing, and Tumo is my absolute favorite track. When I was in my school life, I just saw Rockstar, and I just fell in love with Rockstar. And Ranbir का वो dialogue था, क्या नाम था, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, हम दोनों रॉक कर देंगे. बस मुझे वो देख के लगा कि मुझे डीगो में घुसना है किसी तरह, and I just want to do that. डीगो के कॉलेज में. I just tried my level best to get into DU. एंड वैसे ही जैसे मेरे लिए ये एक मोटिवेशन था डीगो में घुसने के लिए, वैसे आपके लिए क्या मोटिवेशन था कि आपने अपना सिंगिंग करियर को इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया. एंड व्हाट वाज दैट किक कि आपको सिंगिंग ही करनी थी, एंड यू आर डूइंग सो गुड. कैन यू जस्ट टेल अस? Yeah, actually I've always liked performing. मुझे perform करना बहुत पसंद है, but इतने easily opportunities मिलती नहीं है. There are so many singers out there. So I believe that if I started posting content everywhere, people might start noticing me. People will reach out to me, and I might get chances to perform or work with people around. So that was a motivation for me to start posting music, start doing it. But I've been learning music or classical music. मैंने बचपन से सीखा है, taken classes and all that. So I was always inclined towards music, but initially it was just a hobby until recently when I decided that I genuinely want to put more effort into it,
like try to make a living out of this, which is not, fulfilled yet, but I really hope I get to do it full time. I can genuinely relate to you because me being an artist, I know it's how hard it is to get opportunities. And if you get the opportunity, things like COVID and stuff are ruining our days. Yeah. But no problem. We all are motivated and we all are talented. You are very talented, and if you have talent, you will definitely get good opportunities in the future. And I wish you all the best. And Thank the team, the core team, and all the members present in the Zoom meeting today, wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much for this amazing, I would not say a virtual meet. This was a concert, a mini concert. Okay, Yeah, hopefully I might get it to do offline someday. Definitely. सुन लो, सारे प्रार्थना करो कोविड खत्म हो और next year virtual event नहीं चाहिए हमें, offline नहीं चाहिए. Okay, done. So before you go, I just want everyone to click a photo because this is our rivaz. This is our rivaz, हम ये follow कर रहे हैं. So ladies and gentlemen, please get ready for a selfie. Smriti, please get ready for a selfie, and I want your your mini guitar. I think this is ukulele. Right? Yeah, I just want it also in the selfie. So 3, 2, 1. Wow, amazing. So before you go, I will just request the core team to guide you towards the breakout room. And thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, please follow Jyoti Thakur on her Instagram, and please give a round of applause. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, are you guys ready for the next speaker? I just want energy. Me being a host, I am just speaking and no one is reacting. Unmute yourself and react. How's the Josh? Hi. Hi, sir. Hi. Top of the voice. Hi, sir. Yes, definitely. Because till the last speaker, I was personally feeling it. It was too amazing. The going very. Thank you so much. Yes. So till the last speaker, I was just feeling the fest is going amazing. But स्मृति के आने के बाद ना हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई, आई कि नहीं आई, सबके अंदर एक एनर्जी आ गई, and अब और मोटिवेशन चाहिए हमें. So the next speaker coming up for us is a gentleman, and I personally love him. I follow him on his Instagram, and I love him. He says, if you have a problem, then he has a solution. He is the CEO and co-founder of ACADBus, and his name is Mr. Hardik Banga. He is the CEO and founder of ACADBus and a content creator. And he says, let's make social media a better place. Me personally, मैं सबसे ज़्यादा अपना time social media पे spend करता हूँ, and वो जगह बहुत अच्छी जगह बननी चाहिए. He says, let's make social media a better place. So let's welcome Mr. Hardik Banga so that we can make this planet Earth and social media a better place. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. Hardik Banga. So we have Mr. Hardik Banga here. Hello, sir. How are you? Yeah, I think you are on mute. Okay. Hi, first of all, thank you for this warm welcome. I'm very good. How are you? We all are good, and we have been waiting for you. I personally follow you on Instagram, and I just love your content. Thank you and so I'm much. just waiting for your session because I personally have waited for it, and I'm very excited to host it for you. Same. I'm also very excited to speak for you guys. So, ladies and gentlemen, just flood his Instagram. Just follow him right now and message him right now, so that he's continuously looking at his phone the way I am. Please give a round of applause to Mr. Hardik. Thank you so much. Yes, sir. Okay, so like अभी मैं सुबह से follow कर रहा था like what is happening in the event. So there was motivation speakers, बहुत सारे अच्छे लोग थे, और last performance I heard that performance on YouTube, amazing. Okay,
सो आज हम बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं, ठीक है। लाइक अभी बहुत मेन स्ट्रीम बात हो रही थी काफी ज्यादा इससे पहले जब मैं देख रहा था, बट अब हम सबके इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टॉपिक इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बचपन में चलते हैं, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं, बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स एक डायलॉग बोलते हैं, बेटा 10th तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम्हारी ऐश ही ऐश है, ठीक है। अब 10th में पहुंच जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी किक्स इन, हॉर्मोन्स का लोचा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद 10th के बाद सोचते हैं चलो 10th कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तो ऐश ही ऐश है। फिर हम जैसे 11th में आते हैं, फिर हम साइंस ले लेते हैं ठीक है, और फिर वो ऐश कुछ और चीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक इतना बड़ा सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, साथ में हमारे हॉर्मोन्स पीक पे आने लगते हैं, ठीक है, और हमारी ऐश हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम 12th क्लास में पहुंचते हैं और काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं घर वालों को कि भाई बच्चा फोड़ेगा बोर्ड्स में, डीयू में जाएगा, इस कॉलेज में जाएगा, उस कॉलेज में जाएगा। और 12th में फिर एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारा पूरा सब चेंज कर देती है। तुम्हें अपने स्कूल का कोई ऐसा इंसान पसंद आ जाता है जो तुम्हारी लीग से 10x आउट होता है। इज इट रिलेटेबल, है ना? वो इंसान तुम्हें पसंद आता है जो तुम्हारी लीग से 10x टाइम बाहर होता है। और फिर क्या होता है, जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है उससे तुम नीचे ही आ जाते हो। एक वो मीम है ना बहुत ज्यादा फेमस, वो प्यार प्यारी क्या जिसने 12th का रिजल्ट ना गिराया हो, है ना? रिलेटेबल गाइस, ऐसा ही होता है। तुम फिर गिरते हैं, संभलते हैं, थोड़ा सा करते हैं, जैसे तैसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। और कॉलेज में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमें कॉलेज से, ओ माय गॉड, क्योंकि हमने बचपन से बॉलीवुड मूवीज देखी होती है, हमें लगता है हर यूनिवर्सिटी करण जौहर यूनिवर्सिटी है और उसके बाद होता क्या है, हम कॉलेज पहुंचते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़कियों के बाल उड़ रहे होंगे, लड़के गिटार बजा रहे होंगे, हवाएं चल रही होंगी, बाइक्स होंगी, सुपर कार्स होंगी। लेकिन हम कॉलेज जैसे ही पहुंचते हैं, होता क्या है, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम होता है, उसमें हम सबको बिठा दिया जाता है, सामने टीचर एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कॉलेज के बारे में कि हमारा कॉलेज महान क्यों है ठीक है, उसके बारे में। और फिर वो ब्लैक वर्ड्स बोलते हैं जिससे हर स्टूडेंट डर जाता है, 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी, और यहीं पे तुम्हारे आधे सपने चूर हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हें तो लगता है यार क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, राइट? अब धीरे धीरे तुम संभलते हो, तुम कॉलेज लाइफ में आते हो, वहां से तुम्हारी गाड़ी एक्सपेक्टेशन की जगह रियलिटी में आनी शुरू होती है, जहां पे तुम्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। और आजकल तो और भी ज्यादा सैड चीज है, कॉलेज ही नहीं देखा कितने सारे बच्चों ने तो सेकंड थर्ड ईयर में आ गए। मैंने खुद सिर्फ 6 महीने कॉलेज देखा, थर्ड ईयर में आ गए, उसके बाद मैं भी कभी कॉलेज नहीं किया। और फिर सबसे बढ़िया चीज होती है, धीरे 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 बंदा सीखता है, कॉलेज में आके नए नए एक्सपीरियंसेस लेता है, सब चीजें करता है। उसके बाद हमारी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज स्टार्ट होती है, जिसमें हम थोड़े होश आवाज में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप्स। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। वहां से तुम्हारा माइंड डेवलप होना स्टार्ट होता है, तुम्हें चीजें और ज्यादा क्लियर होना स्टार्ट होती है। जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, अरे वाह क्या बात है, यही तो जिंदगी है, यही तो खुशियां हैं, सब कुछ मतलब एवरीथिंग सीम्स सो गुड एट दैट टाइम, स्टार्टिंग में, है ना? बट फिर क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस की दुनिया से आते हैं, हमने प्यार करना कहाँ से सीखा? स्कूल में सब्जेक्ट तो था नहीं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा ग्रेट है, ये सब पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। तो स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं था, रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। अब जैसा जैसा चलता है, हमने प्यार करना सीखा बॉलीवुड से। बॉलीवुड में क्या होता है, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक विलन होता है। विलन हीरोइन को उठा के ले जाता है, हीरोइन को बचाता है, और हैप्पी एंडिंग। बट रियल लाइफ में कोई विलन नहीं है, हम खुद ही हीरो हैं, हम खुद ही विलन हैं, और ये हमारी ही लड़ाई है और हमें ही जीतनी है। यही होता है रियल लाइफ में, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, और वहां पे चीजें खराब होनी स्टार्ट होती हैं, राइट? आज अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, विच इज 18 to 24, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आर सैड, डिप्रेस्ड, एंड द मेन रीजन इज देयर रिलेशनशिप्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर रिलेशनशिप्स, राइट गाइस, राइट? एक बार मुझे
चैट में बताओ, यही है सबका रिलेटेबल? मोस्ट ऑफ द पीपल आर सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, मे बी नॉट टू द कोर बट समहाउ, राइट? पर ऐसा क्यों? व्हाई? रिलेशनशिप तो एक सुंदर चीज है, प्यार तो अच्छी चीज होती है. व्हाई इज दिस हैपनिंग विद अस? बिकॉज वी वर इन एक्सपेक्टेशंस कि बहुत ऐसा ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, राइट? चलो अब जो हो गया हो गया. फेलियर्स, सेटबैक्स. फेलियर सबको, सबके लाइफ में फेल होते हैं. मैं भी फेल होता हूँ, मैं भी फेल हुआ हूँ, बहुत बार हुआ हूँ, अभी भी होता हूँ. ठीक है, मैं तो 7th क्लास में ही फेल हो गया था एक बारी. और उसके बाद एक ये ऐसा फेलियर है रिलेशनशिप का जो आपको बहुत कुछ सिखाता है. बट होता क्या है, हमें जब ये फेलियर मिलता है, ये हार्ट ब्रेक मिलता है, हम बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं. हमें लगता है सारी लाइफ की प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ ही है. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगने लग जाती है, सब कुछ एक बर्डन लगता है, राइट? रिलेटेबल ऐसा ही होता है. हमें लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, सारा बुरा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, राइट? और हम उस फेलियर के डर से आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें खराब कर देते हैं. सो माय मेन पॉइंट इज, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ. कहना क्या चाहता है भाई, बताना. ठीक है, द मेन पॉइंट इज फेलियर्स और सेटबैक्स इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, हर बार फेलियर का तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा. ठीक है, बिना फेलियर के यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेप. और रिलेशनशिप तो एक ऐसा खूबसूरत फेलियर है जो तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ. इफ यू लुक दैट थिंग उस नजरिए से, ठीक है, if you look what you can learn from that person, the whole situation, and how you can grow out of it. सब सही है, वो सैड सॉन्ग, दोस्तों के साथ बैठ जाओ, महफिल जमा लो, सब बढ़िया है. That is also important experience, right? But what is most importantly, it is to learn from it and grow out of it, right? This was my main point. कि एक्सपेक्टेशन की जो हमें इतना ऊपर चढ़ा रखा है ना, बहुत ज्यादा, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, होता है 1 महीने 2 महीने, बट इट स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड. उसके बाद यू हैव टू बी मैच्योर फ्रॉम हियर, राइट, टू हैंडल थिंग्स. और उसके बाद जब फेलियर्स आते हैं, लर्न फ्रॉम इट, डोंट स्टॉप, राइट? दिस वाज माय मेन पॉइंट कि एक नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से पूरे वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव नेगेटिव मत बनाओ. ठीक है, हुआ, सीखो, बाहर जाओ और एक्सप्लोर करो. ये दिस इज द मेन पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. Ladies and gentlemen, please, I genuinely feel ये चीज जो है ना, इससे सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर गुजरते हैं. मैं भी जब कॉलेज में आया था ना, आई वाज लाइक, नहीं किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ नहीं करना, बट मैं भी पढ़ गया था. और जब मैं पढ़ा और फिर मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, आई जेन्युइनली फेल्ट इट. मैं भी एक कमरे में पूरा दिन उदास बैठा रहा. बट मुझे एक टाइम की चीज रियलाइज हुई कि कब तक मैं ये करता रहूंगा, मेरी लाइफ थोड़ी ना खत्म हो रही है यार. यू नो, इतने सारे लोग हैं वर्ल्ड में जिनके साथ ये चीज होती है. एंड मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जब आपके साथ ये चीज होती है ना, उस टाइम पे ब्रेकडाउन पक्का होएगा. किसी को 1 मंथ लगेगा, किसी को शायद 5 मंथ्स लगेंगे, शायद कोई कबीर सिंह बन जाएगा, मुझे चैट बॉक्स में दिख रहा है. बट एक चीज और होगी, उस टाइम पे आपको हार नहीं माननी, उस टाइम पे आपको काम करना शुरू करना है. एंड दैट इज द राइट पॉइंट जब आप अपने लिए काम करोगे. एंड जब आप उसके बाद सक्सेसफुल बनोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यस, ये चीज एक नीडेड था. एक लात पढ़नी बहुत जरूरी है लाइफ में, ये मैं पर्सनली मानता हूं. एग्जैक्टली. हार्दिक, डू यू? बिल्कुल. सो हार्दिक, आई पर्सनली वांट, यू नो, बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. एंड चैट बॉक्सेस, यू नो, किसी को एक कुलवर्धन जी हैं, ये कह रहे हैं माय रिलेशनशिप इज सो वर्स्ट, आई कैन फील यू ब्रो. यार, यहाँ पे कुछ किसी के पास रिलेशनशिप है भी नहीं, लोग उसके लिए रो रहे हैं. अभी लिटरली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरे पास तो वो भी नहीं है. बट जो है आपको उससे खुश रहो. अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू नो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको ग्रो करो. सो आई वांट अ Q&A सेशन. यू नो, हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड आपके लिए. सो आपका जो भी क्वेश्चन है, आप उसको चैट बॉक्स में लिखो एंड हम आपका क्वेश्चन हार्दिक तक लेके जाएंगे. ठीक है, और आपके डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कराएंगे हार्दिक से. नो प्रॉब्लम इन दैट. फटाफट, just give me a question. Come on guys, come on, फटाफट. चलो मैं ही पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ.
Okay, cool. I hope and I think आपका कभी ब्रेकअप हुआ हो या कुछ दिल टूटा हो. ब्रो कोड कभी दिल टूटा है तो आपने कैसे डील किया उससे? You know, ये सब बातें तो ठीक है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बट आपने कैसे डील किया? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पार्ट इज कि ना जब ये सब चीजें हो जाती है ना हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि यार इतना टाइम से सब चीजें सही थी तो एकदम से ऐसा क्या हो गया. ठीक है, हमें लगता है कि सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा. हम उस होप में जीते हैं, राइट. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट व्हाटएवर हैपेंड विद यू. ठीक है, अगर जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, चार्ज ही नहीं लोगे उस चीज का, यू वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट. यस, व्हेन इट हैपेंड विद मी, मैं 2-3 महीने तो कुछ ऐसे ही था कि मेरे को लगता था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट नहीं होना था. फाइनली आफ्टर 2-3 months आई एक्सेप्टेड माई सिचुएशन. उसके बाद इट ऑब्वियसली इस पूरे फैक्टर में, इस पूरे फेज में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप बाहर जा पाओगे. ऐसा नहीं है कि आज होगा और कल एकदम ठीक हो जाओगे, कोई गोली खा लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन यू हैव टू लर्न कि आपने गलतियां कहाँ करी हैं. ठीक है, मे बी डिसीजन मेकिंग वाज रॉन्ग. हम करते हैं लाइफ में, हम छोटे छोटे डिसीजन होते हैं उसमें बहुत टाइम लगाते हैं, है ना. कभी बाहर जाएंगे कुछ खरीदने, 10-20 रुपए के लिए लड़ जाएंगे कि नहीं भाई तू इसको 20 रुपए का सस्ता ही दे मेरे को. ठीक है, बट जब हमें लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन आते हैं, कुछ लोग तो ले ही नहीं पाते हैं, कोई और लेता है उनके डिसीजन. ठीक है, और जब हम लेते हैं तो कुछ बहुत जल्दी में ले लेते हैं, घबराहट में ले लेते हैं. बट आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां हुई, उनसे सीखो और डोंट स्टॉप. ठीक है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ ऑब्वियसली. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, नए लोगों से मिलो, बातचीत करो, खुद के बारे में और जानो, अपने जो आपकी हैबिट्स हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ जो आपके अंदर इमोशंस है ना, यूज दोस इमोशंस एज अ फ्यूल फॉर योर ग्रोथ, राइट. वो बोलते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी. वाह, ऐसा भी कर सकते हैं. अमेजिंग. एंड बिल्कुल. एंड आई कैन सी देयर आर 120K फॉलोअर्स. ओके, एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम. तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब कैसे आपने शुरू कैसे किया, कंटेंट क्रिएशन कैसे शुरू किया? यू नो, कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जो 90% लोग आई थिंक करना चाहते हैं आज की डेट में. बट सबको या तो एक है कि वो यूनिकनेस नहीं है उनके पास करने की, या वो कॉन्फिडेंस नहीं है. तो वो दोनों चीजें, आपका कंटेंट, योर कंटेंट इज जेन्युइनली यूनिक एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, तो वो कैसे आता है? ओके, देखो, व्हाट पीपल थिंक इज कि यूनिक करना है तो यू हैव टू फिगर आउट समथिंग, राइट. नहीं, यू हैव टू बी योरसेल्फ. ठीक है, आप खुद में एक यूनिक हो, और जब आप व्हेन यू विल बी योरसेल्फ, आप अपने आप, आपका कंटेंट भी यूनिक रहेगा. इफ यू विल ट्राई टू कॉपी समवन, किसी का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करोगे, यू कैन कॉपी द वर्ड्स, लेकिन अगर स्टाइल आपका होगा ना, फिर भी कंटेंट चलेगा. लेकिन अगर आपका पूरा स्टाइल ही कॉपीड है, बट द प्रॉब्लम इज आपको जस्ट बी योरसेल्फ. हर इंसान जो खुद में है वही अच्छा लगता है. आप किसी को कॉपी करोगे, सुपरफिशियल रहोगे, तो वो कुछ समय तक चलेगा, बट उसके बाद नहीं चलेगा, राइट. जो जॉनर, जो नीश आपको पसंद है, उसके साथ स्टार्ट करो एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर 1 or 2 years and it can change your life forever. That is the thing. Great. That's it. So I'll take one question from the audience. This is from Mazia Rahman. She says, or he says, what do you think about the line "single is best"? I support this. Single is best. Yeah, I always your thoughts. See, it is thoda sa contradicting, but yeah, depends person to person. I'm not saying I'm against relationships, but yes, relationships can help you to grow if you find the right person जो आपके goals को और आपकी बातों को समझता हो. That what matters the most. But if you're single and you're happy within yourself, that's the best thing you can do. That's great. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Hardik Bandhan. And one thing I just want to know, and I have a question about that also. Anushka says, can you just tell us about ACADBuzz? Okay. So ACADBuzz is my first startup. 2019 जब मैं 19 साल का था मैंने start किया था. It is all about EdTech. We sell courses which is on personal development, like your personality. Some are on content creation, how you can create videos. Some are on finance as well, and we are trying to like upgrade the courses every month. Basically, we're an EdTech company. Wow. So if you want to be a content creator, go follow ACADBuzz. उनसे पूछो कि कैसे करते हैं, and अपना confidence मत lose करो.
You can see Hardik is so confident. I just saw your story yesterday when you were, telling us that you are coming to our college. That was great. That was great. उसी में इतना confidence था, मुझे उससे confidence आया because me being a host, I'm nervous before every show, which is normal. Everyone you can be nervous before every show, and trust me, I saw your story 3 to 4 times, and मुझे लगा हाँ यार कुछ नहीं होता, हो जाएगा. तो आप सभी को confident रखो और confidence रखो, वो emotions रखो. And एक question और आया है, how to control feeling and emotions? If you can answer this. Also. Okay. To be really blunt, you cannot control feelings and emotions. That is not which is in your hands. You just have to feel them. अगर आपके emotions है and you have to convey it, just be open about it. And there is nothing about having feelings or emotions for someone, right? Just be expressive and say it. That's the best thing you can do. क्योंकि अगर आप खुद के अंदर रखोगे, it would create problems for you. Great. This is great explanation. ठीक है, ये सब चीजें follow करो, ये सब चीजें समझो. कुछ नहीं होता, hard work होंगे लाइफ में, बट हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे. इतना मोटिवेशन सेशन हमारे साथ आज चल रहे हैं, हम उसको कहीं ना कहीं यूज में पक्का लेंगे. So Hardik, we genuinely thank you for coming. Trust me, your session was amazing, and I thank you on behalf of our whole team. Thank you so much. And before you go, I just want a snapshot with you. Like everyone, please अपना कैमरा ऑन करो. इस फोटो को Instagram पे डालो, tag me, tag Hardik. We all will reshare, and let's just kill it in 3, 2, 1. Okay, this is done. So Hardik, thank you so much for coming, and I would request all the core members to take out Hardik to the breakout area. Thank you so much, Hardik. Thank you so much. So ladies and gentlemen, how are you guys doing? I just want, अब देखो, अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ. First of all, everyone camera on करो, and everyone unmute yourself, everyone, because the next 2 speakers coming up for us, both are comedians. अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अगला कौन है, बट मैं एक चीज बताता हूँ, both are comedians. ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए ना तालियां बहुत मैटर करती हैं. ठीक है, me being an artist, अगर मेरे लिए कोई तालियां बजाता है ना, तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है हाँ कि I am getting that energy. बट एक कॉमेडियन के लिए पता है क्या चीज मैटर करती है? हंसी, laughter. If they will be able to listen that laughter, उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा. So any guesses हमारे पास अगला स्पीकर कौन आने वाला है? Any guesses? Excited? Any guesses कौन आने वाला है? Any guesses? चेतन गोयल. Chetan Goyal. Okay. And chat box is full with Gupta ji. Okay. तो मुझे नहीं पता कौन आने वाला है. मैं तो आपसे जो आप मुझे बोलोगे मैं उनको बुलाऊंगा. आप फटाफट बताओ मुझे कौन आने वाला है. चेतन और गुप्ता जी. माइक पे बताओ मुझे, जिसकी आवाज ज्यादा तेज आएगी, जिसके लिए हम मेजॉरिटी विंस करते हैं. Gupta ji. Chetan. Continue it. I'm counting. I'm still confused. मैं चेतन को बुलाऊं कि गुप्ता जी को बुलाऊं? Gupta ji. Everybody wants to. अच्छा एक बात बताओ, चेतन की एक रील देखी थी मैंने यार लास्ट. उसमें वो कह रहा था कि मेरा गला खराब है, और कह रहा दिल्ली में सबका गला खराब है. अच्छा तेरा भी गला खराब है? ठीक है यार, मेरा भी गला खराब है. किसी ने वो रील देखी थी? अच्छा, और किसका गला खराब होता, कौन कौन रिलेट कर पा रहा था उस रील से? कोई रिलेट कर पा रहा था? Don't raise your hand. Come in front and tell me. Arpita said she was relating. Okay. आपका भी गला खराब था, बहुत दुख हुआ. मेरा भी खराब हो गया था भाई. सबका हो रहा था. Okay, सबका हो रहा था. No problem. So we have last 2 speakers. Okay, and I want these sessions to be like comedy as hell. We will laugh. We will enjoy. Okay. Are you guys ready to enjoy? Are you guys ready? Can I see hands up in the sky? In the air, not in the sky, in the air. Wow. ऐसे ही रखना, सारे ऐसे ही रखना. मैं देख रहा हूँ सबने करा कि नहीं करा. Okay. Wow, Mazia, you are amazing. The way you are doing it. Ashima also. And see Ashima को देखो. She is working also, and she is following my command also. On the count of 3,
1, we will do hip hip hooray for everyone and each one of you, because I'm seeing that everyone is waiting since 10:30 for the speakers. So I just want everyone to do hip hip Hooray! hip hip. Hooray! एक ही था, बहुत बड़ा शांतिपूर्वक बोल रहा था। Okay, so are you guys excited? Let's start it. If art is how we decorate space, music is how we decorate time. ये Instagram caption, Instagram bio है उस पर्सनालिटी का जिसको मैं अगला बुलाने वाला हूँ। बता सकता है किसका है? Chetan Goyal. Chetan Goyal. पक्का चेतन गोयल के सब रेडी हो? He's on the screen. Yep. Okay. Chetan. चेतन, सब चेतन के लिए रेडी है मेरे ख्याल से। Okay, just give me a second. Okay, so आप मुझे I can ask anyone. Okay, योगिता, tell me आपने पहली बारी चेतन को कहाँ पे देखा था? Obviously Instagram पे देखा था, but क्या पहली बारी याद है जब आपने चेतन को देखा और उनको फॉलो का बटन दबाया? फर्स्ट टाइम मैंने पैनल में ही देखा था और तभी फॉलो किया था उन्हें। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। Okay, anyone who is following Chetan from his starting days? Anyone? I want to speak. Oh, why? Hi, Simar. How are you? Hello. First of all, Simar के लिए जोरदार तालियां। पहले Simar के लिए जोरदार तालियां। Because she is the one जो अपने आप से इनिशिएटिव लेके बोलती है। वाह। आपने पहली बारी कब देखा था? Unmute yourself and tell me. Can't unmute. I first saw him in men's XP reels. Oh wow. Yeah. Okay. And do we have anyone else जिसने सबसे पहले चेतन को कहीं पे देखा था and तब से उनके फैन बन गए? Anyone? इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब देने पे एक अच्छा सा प्राइज है जो मैं चेतन के एक्ट के बाद बताने वाला हूँ। तुम इसको हल्के में मत लो। Anyone? Hands up. Okay, अपूर्वा गुप्ता, आपने कब देखा था चेतन को सबसे पहले? मैंने रूही में देखा था। Oh wow, तो आपको कैसी लगी थी उनकी परफॉर्मेंस? I just want you guys to be loud with Chetan, okay? चेतन ने मुझे ये चीज बोली है कि he wants everyone to, you know, उनका कैमरा ऑन होना चाहिए first thing, and second thing उनका अनम्यूट होना चाहिए, because when हम जब एक आर्टिस्ट अपनी तारीफ सुनता है ना, और उनकी तारीफ उनके लिए हंसी है, जब वो सुनता है ना, तो उनके लिए वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ओके, आकांक्षा जो धूप सेकते सेकते हैं ये फेस्ट एंजॉय कर रही है ना, मजा आता है देख के। वाओ। So ladies and gentlemen, started in lockdown 2020. Since the age of 18, he wanted to do this, but never did it. And this also led him to the Bollywood movie Ruhi. He is an actor, comedian, Instagram influencer, who is currently working as an actor at Men's XP. वारी वर्षी खटन ग्यासी खटके ले आंधी कोयल. Ladies and gentlemen, please give it up for Mr. Chetan Goyal. Hello guys. What's up? Hello Chetan, how are you, my brother? We are great. जितो देखो अभी चेतन की हमें आवाज सुनाई दे रही है, मतलब चेतन आ गया है, बट अभी दिख नहीं रहा। You know, No, we can Chetan, see. No, we can see him. Okay. Chetan, how are you, my brother? Oh, I am good, bro. I am good. You tell, how are you? What's up? here's the handsome man. Ladies and gentlemen, spam his Instagram. DM him, follow him right now, so that he gets distracted while doing this. मैंने इसलिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं नहीं कर पाया और continuous मेरे साथ ही हो रहा था, मैं चाहता था आपके साथ। Chetan, first of all, I genuinely am very happy to host it with you, and I have been following you, and I was kind of relating to you when I heard this, and when I read this about you, that since the age of 18 you wanted to do this, but कोई चीज आपको रोकती थी, ठीक है, कोई चीज, और लॉकडाउन में पता नहीं क्या हुआ, आपको कोई चीज हिट करी और आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी, and today we all know you, and you are in front of us. मेरे साथ भी सेम चीज होती थी,
मुझे भी ये चीज रोकती थी कहीं ना कहीं, और मैं भी नहीं करता था। स्टार्ट में सोचता था, स्कूल टाइम पे मैं सोचता था कॉलेज में करूंगा, कॉलेज टाइम पे मैं सोचता था मेरे कॉलेज के बाद करण जौहर खड़ा है, सिल्वर लेके हम स्टार्ट कर देंगे काम। तो मुझे ऐसा होता था, मैं डिले करता रहा प्रोसेस को, बट समहाउ जो मैं करना चाहता था आज मैं वो कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड आई होप यू आर आल्सो हैप्पी विद इट। सो इफ यू कैन टेल आवर ऑडियंस कि वो चीज आपने कैसे स्टार्ट करी, एक चीज ये बता दीजिए, उसके बाद आपके सेशन का स्टार्ट करेंगे। मतलब आपने वो फियर को कैसे किल किया? यार एक्चुअली द पॉइंट इज कि ना, जो आपने ऋतिक रोशन की एड देखी स्प्राइट वाली या 7 अप की, कौन सी, डर के आगे जीत है, वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक नहीं है, वो माउंटेन ड्यू सॉरी यार, सॉरी। अरे भावना को समझो यार, भावना को समझा। बट दैट इज द ट्रूथ। पता है कि आप लाइक फियर को ओवरकम करने का ना कोई भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू फेस इट। एक छोटी सी बात है, जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो ना, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी और कर लो, एंड में आपको खाना खाना ही पड़ेगा, तभी आपकी भूख मिटेगी। सो दैट इज एग्जैक्टली, अगर आपको फियर है यू हैव टू फेस इट। और फेस करने का जो मेरे को जो सोच के स्ट्रेंथ मिली थी, वो यही सोच के स्ट्रेंथ मिली थी कि एक चीज क्या होती है लाइफ में, द वन थिंग दैट विल हर्ट यू द मोस्ट इज रिग्रेट। जब आप 50, 60, 70 साल के हो जाओगे ना, जो अपनी लाइफ में मुड़ के देखोगे कि यार वो जो काश होता है ना, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये ट्राई कर लेता, वो सबसे ज्यादा हर्टफुल होता है। सो my solution to overcome fear was that I do not want any regrets in my life. So I just went on and naga jo hoga dekha jayega. No, this is genuinely nice. If you deal with this attitude, तभी कुछ ना कुछ होएगा। जो होगा तो वो तो देखा जाएगा, बट तभी कुछ ना कुछ होएगा। एंड हमारे चैट बॉक्स भी काफी कॉमेडी बन गया जब से चेतन आए हैं। अभी मैंने बोला था भावना को समझो, तो एक लड़के ने लिखा कि भावना नहीं मिल रही। अब सावा जैनबाद दिख रही है कि लीवर। तो एक कॉमेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई जस्ट वांट चेतन, यू शुड स्टार्ट योर सेशन, उसके बाद हमें Q&A करेंगे। ऑल सेट ब्रो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज चेतन गोयल फॉर यू। So one thing before I go, unmute yourself and camera on, okay, please. Okay. Let's start. हाँ जी, तो hi everyone, hello everyone. Hi. Hello. Hello. मेरे को सबसे हाई सुनना नहीं है, ये मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हाई बोला है। हेलो सारे हाई करने लगे, यहाँ पे 324 लोग हाई करेंगे, मैं तो 20 मिनट हाई करता रहूंगा सबको। नहीं, अभी सिर्फ सुनिए, मैं सबसे बात करूंगा धीरे धीरे। तो ये समृद्धि शर्मा बहुत अच्छी है, ये चैट में हेलो लिख रही है, एज आप चैट में हेलो लिख दो अभी, ठीक है? तो सुनिए आप सब। अब हेलो, फाइनली दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, और मेरा नाम चेतन गोयल है। और मुझे ना एक चीज जो सबसे ज्यादा समझ नहीं आती ना, वो ये है कि जब भी कोई जूम कॉल पे आता है तो अपना नाम क्यों बताता है सबसे पहले। मतलब ये बड़ा ऑब्वियस नहीं है कि हम सबके जो डब्बे बने हुए हैं उन सब पे नीचे हमारा नाम लिखा हुआ है, कि आके सबसे पहले आपकी शक्ल से भी पहले आपका नाम दिखता है। तो मैं ना बहुत ज्यादा आदत हो गई है ऑब्वियस चीजें बताने की। जैसे आप कभी उबर बुक कराओ, कैब वाला फोन करके क्या कहता है, भैया कैब बुक कराई थी। क्या बताऊं क्या बोलता हूँ मैं, कहता हूँ नहीं, मेरे को तो आपके साथ वैलेंटाइंस डे बनाने, डेट पे जाना है, इसलिए मैंने आपको नंबर दिया। बताओ जैसे एक कॉलेज में लोग कितना मर्जी बोल ले कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी बिजनेस प्रमोट करने के लिए बनाई है, पर बनाई तो फ्री अटेंडेंस के लिए है ना तुम लोगों ने। हाँ ये तो सच है ना। जब मैंने जोक मारा ना, आशिमा का कैमरा ही उड़ गया यहाँ से। मेरे को लगा आशिमा से धक्के में चली गई, ये क्या बोल दिया चेतन ने। आशिमा गिर गई एकदम। ट्रू दैट। जोक्स अपार्ट, यार एंटरप्रेन्योरशिप ना एक मतलब बहुत ही टफ चीज होती है, पता है। इट इज नॉट एन इजी जॉब। और एंटरप्रेन्योरशिप से ज्यादा मुश्किल बताऊं क्या होता है, स्पेशली जो मैंने देखा है, वो है आपकी सोसाइटी का ये लोगो समझना। अरे क्या बना रखा है ये ऐसा नहीं लग रहा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ई निकाल ले और उसकी 3 चोटी बना दी। देखो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताओ। देखो मतलब कमाल है यार। बट चलो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। बट सबसे मेन बात बताऊं क्या है, आपके इंस्टा पेज का नाम बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा नाम, ECEL_LIC है ना।
वो सुन के मेरे को पहली बार पता क्या लगा था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है ये, ग्रीवेंस सेल है उनका। किसी को भी अगर अपने बीमा में कोई परेशानी हो तो ECell_LIC को ईमेल लिखे, ECell_LIC, आपके जीवन में भी और आपके जीवन में। खुद सोचो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ये देखो, अच्छा ये देखो ECell_LIC, ये मतलब आशिमा, एम आई रॉन्ग और राइट? प्लीज टेल मी, सच सच बता दो तुम। यार मैं कुछ गलत तो बोला नहीं। समझने वाली, वो तो जैसी जिसकी सोच। ओ माय गॉड, आज वो तुम इतना तैयार हो गए क्यों बैठे? तुम शार्क टैंक में जा रही हो क्या आज? एग्जैक्टली। वाह यार, मैं शार्क टैंक में जा रही हूँ। ओ माय गॉड, वेरी गुड। बट एनीवेज, मतलब मैंने आपका इंस्टाग्राम का पेज खोला जब मुझे पता चला, एंड एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई वहां पे ना, स्पेशली आप सबकी फोटोज देख के, कि मन तो तुम सबका प्रोफेसी में जाने का, तो तुम अटक गए गलती से ECell में। मन तो सबका प्रोफेसी में था। मतलब आप ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, ये प्रेसिडेंट की फोटो है ECell के, खुद बताओ आप। हॉट लग रही हूँ ना यार, ये कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो जेब में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहा है? ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर थोड़ी होते हैं, एंटरप्रेन्योर एकदम एक्टिव होते हैं। ये आशिमा, तुमने ये सोसाइटी सिर्फ अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए बनाई है, और ये सच है। रतन टाटा जी ने सुना था, he goes in shorts to his office। तो तुम अपने आप को रतन टाटा से कंपेयर करो, ये होता है Why not? असली एंटरप्रेन्योर। नहीं, ये सही में, ये मतलब ये मेरे को कोई फेमिना मिस इंडिया की ऑडिशन की फोटो लगी, बट गुड गुड, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है। और ना, ये जो अभी तुमने बोला ना, मेरे को सबसे ज्यादा जो हंसी आती है ना कॉलेज की सोसाइटीज पे, मैं भी कॉलेज में था, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी सोसाइटी उसका पार्ट था, तो मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आती है जब कॉलेज की सोसाइटीज अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे आपको जब अपने मेंबर्स जोड़ने होते हैं, आप लोग क्या चलाते हो? रिक्रूटमेंट ड्राइव। खाने तुमने वो श्रीराम की कैंटीन में चिली पोटैटो है, रिक्रूटमेंट ड्राइव तुम ऐसे करो जैसे सियाचिन लेके जाओगे सबको। और उसके, और एक सेकंड, सबके माइक बंद, अरे सबके माइक क्यों बंद हो गए भाई? मुझे किसी का कुछ हंसी नहीं सुनाई दे रही, सबके माइक क्यों बंद? I am genuinely laughing because I also, when I received the call from Ashima, I was saving her contact. I said Ashima LIC, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा LIC, तो मुझे, मेरे साथ भी ये सेम चीज फेस हुई थी मुझे भी। तो क्या बोलते हैं, हाँ, और एक और चीज जो मेन बात होती है, आप लोगों की जो मतलब कोर मेंबर्स, कोर कमिटी, तुम्हारी सोसाइटी है या तुम अर्थ का क्रेटर ढूंढने जा रहे हो कहीं? मतलब इतना ऐसा क्या इसमें तुम कोर एकदम, मतलब टाटा सन्स, टाटा की जो इतनी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है, उससे ज्यादा सीरियसली तुमने अपने आप को ले लिया यार। हाँ, तुमने ले लिया है, बट कोई बात नहीं। और उसी से मेरे को समझ आता है, मैंने आपके पेज पे पोस्ट पढ़ी थी, सीनियर चांसलर। मतलब ना, मैंने सोसाइटीज में देखा है कि नाम होते हैं, पोस्ट होती है, और ये सीनियर चांसलर की क्या पोस्ट है? तुम जर्मनी का देश चला रहे हो या सोसाइटी चला रहे हो? सीनियर चांसलर। और यहाँ पे हमारी सीनियर चांसलर होंगी प्रियांशी जी, है क्या वो यहाँ पे? अरे हेलो प्रियांशी। आपको पता है प्रियांशी खुद इस पोस्ट को नहीं मानती, मैं बताता हूँ क्यों। प्रियांशी की बायो देखो इंस्टाग्राम पे क्या है, मैं प्रियांशी की बायो पढ़ता हूँ सबके लिए। 21 एंड इन डिनायल। वो खुद डिनायल में है भाई, वो मान ही नहीं रही, कह रही मैं नहीं हूँ सीनियर चांसलर, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाने तो बनाओ। वो खुद डिनायल में है यार, और तुमने उसको वो बना दिया है। समझ नहीं आ रहा मेरे को। Actually, we have to come up with the name of a post, तो चलो सीनियर चांसलर। मैं कह रहा हूँ, बट एक चीज है गाइस, कोई हंसने की बात नहीं है। प्रियांशी जो है ना, वो मतलब प्रियांशी इज वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स ग्रोथ। अब प्रियांशी की फोटो देखो एक बार जो पेज पे है, प्रियांशी के कंधे भी टेढ़े हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में ग्रोथ है यार। शी ऑलवेज वांट्स टू गो अप। प्रियांशी को सीनियर चांसलर नहीं, सीनियर प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तुम लोगों ने पता नहीं क्या मजाक सा कर रखा है, कमाल है यार। मतलब बट चलो ये भी ठीक है, मैं कहूँ सब ठीक है। देखो, जिस कॉलेज में फैशन सोसाइटी का नाम प्रोफेसी हो, उस कॉलेज में
कोई भी नाम आप लोग रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर मेरा एक और मेरा छोटा सा सवाल है, जूनियर चांसलर किसने सोचा था? जूनियर चांसलर, तुम्हें शर्म नहीं आई चांसलर जैसे इतने भारी वर्ड के आगे जूनियर वर्ड लगाने में? तुम्हें मतलब तो अंदर से नहीं लगा तुम इंग्लिश के साथ भी कुछ बुरा कर रहे हो? तुम खुद सोचो, तुम्हें कल तुम न्यूज चैनल खोलो और न्यूज आ रही है, इन टुडेज ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया टू इलेक्ट इट्स जूनियर प्राइम मिनिस्टर। तुम सीरियसली ले पाओगे उस आदमी को, उस इंसान को? हंसी नहीं आएगी तुम्हें? तो ये वाली जो पोस्ट है ना, ये बिल्कुल जबरदस्ती बनाई गई है। हमारी विधि जैन जी ने जो है 3-4 टकाटक के पैकेट दिए हैं आशिमा को ब्राइब करा गया है, और उसके बाद ये विधि के लिए पोस्ट बनी है। ये विधि है यहाँ पे, विधि जी है यहाँ पे? हाय। अरे हाय विधि, हाय, कैसे हो आप? मैं बढ़िया। क्योंकि आप एक और चीज देखो, विधि ने अपनी डीपी में लगाया हुआ चैंडलर बिंग। विधि को घंटा मतलब है तुम्हारी सोसाइटी से, वो खुश है भाई फ्रेंड्स देख के ये लाइफ में। तुमने उठा के उसे जूनियर चांसलर बना दो, कह रहे ठीक है बना दो, मेरे को क्या जा रहा है? तो ये मतलब गुड। बट मेरा मेन सवाल है, मतलब चलो यार तुम्हें लग रहा होगा आगे क्या बोले जा रहे हैं, एक जेन्युइनली आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, सो आई वांट यू गाइस टू लिसन केयरफुल। इट्स लाइक कुछ हंसने की बात नहीं इसमें। आस्था ने 1 2 3 4 8 हंसने वाले इमोजी बनाए। आस्था इतना अच्छा तो जोक भी नहीं था, तुम विधि पे हंस रही हो, वेरी बैड। चलो एनीवेज सब छोड़ो। हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं आशिमा जी, उनकी बायो है एट टाइम्स फनी मोस्टली सार्केस्टिक, ठीक है कोई बात नहीं। समीक्षा कालरा जी की बायो है आई लाइक बीइंग द फनी वन। मेरी समीक्षा कालरा जी, आई लाइक बीइंग द फनी वन। और विधि की डीपी में मैंने आप लोगों को बताया चैंडलर बिंग लगा हुआ ही है। तो आप लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी बना रहे हो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बना रहे हो। कॉमेडी नाइट्स विद चेतन गोयल। आपका स्टार्टअप से ज्यादा ध्यान ना हंसी मजाक में, ठियल्ले में है। आपको हंसने में मेरे को लग रहा है आप लोगों का ज्यादा ध्यान है। ये कौन खासा? हेलो, खासा कौन है? कौन खासा भाई? ये लड़की खासी है। एक सेकंड, किसका क्या नाम है? खुशी खासी है। खुशी ने म्यूट करा है, खुशी खासी है। मैं सैनिटाइजर डाल रहा हूँ खुशी पे। खुशी प्लीज आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखे लैपटॉप के। ये अब अगर जब खांसी तब तो तुमने ऐसे करा नहीं, अब तुम हंस रही हो तो तुम ऐसे ऐसे कर रही हो। चलो एनीवेज, तो मतलब आपकी जो सोसाइटी है उसमें ना हंसी मजाक ज्यादा होता है। कल को मतलब अगर विल्शा आती है, विल्शा जी है यहाँ पे? विल्शा जी से बात करना चाहूंगा मैं। हाय विल्शा। मतलब कल को अगर विल्शा जी आती है कि आशिमा आई हैव अ स्टार्टअप आइडिया, तो आशिमा, समीक्षा, विधि उसका बोलता है ए नहीं चलना, हंसा जोक मार, हंसा ना, हंसा आइडिया नीचे, हंसा हमें हंसा। रिक्रूटमेंट में हम यही करते हैं, जोक सुनाओ पहले, अगर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तभी आप आ सकते हो। क्या ही रहा। पर विल्शा का मूड बहुत ऑफ है यार, विल्शा जोक वोक नहीं सुना पाएगी। विल्शा का मूड ऑफ है, तुम्हें पता है? यू गाइस इवन नो आपके एक सोसाइटी मेंबर का मूड बहुत ऑफ है पिछले 1 महीने से, स्पेशली पिछले 1 हफ्ते में। तुम कैसे दोस्त हो यार? और मैं बताता हूँ क्यों ऑफ है, मैं बताता हूँ। विल्शा का मूड इसलिए ऑफ है, विल्शा की बायो है जस्ट वेटिंग फॉर द हॉट गर्ल समर टू हैपन सून। तो अभी हो गया बहुत ज्यादा ठंड, तो विल्शा ठंड में सैड हो जाती है। विल्शा ओनली लाइक समर्स। विल्शा को ठंड बिल्कुल नहीं पसंद। बट मतलब विल्शा कोई बात नहीं, देखो गर्मियां आने वाली है, आती हैं साल में हर बार आती हैं, तो वेट उस चीज की करते हैं ना जो हो, पता है हो या ना हो। गर्मियां तो आएंगी तो आप, बट चलो ठीक है, अपना अपना होता है। विल्शा को स्ट्रॉबेरीज भी बहुत पसंद है, विल्शा ने स्ट्रॉबेरी बनाई है, तो ई सेल वाले मैं चाहता हूँ विल्शा को प्लीज स्ट्रॉबेरी दो। आउट ऑफ बजट। हेलो, तुम रहने दो, या आउट ऑफ बजट बोल के ना तुम रहने दो। चलो तो यही है गाइस, मतलब जो भी आपका अच्छी सोसाइटी आपकी, काफी मेरे को ना काफी मतलब इंटरेस्टिंग पेज है आपका। एक और आपकी मेंबर है रितु जी, वो है क्या यहाँ पे? She is having COVID, so she was unable to join us. आपने काफी सीरियस कर दिया मेरे को। आपने जितनी
कोविड बोला है ना, तो मेरे को भी अब मेरे को रोना आ रहा है थोड़ा सा। मैं काफी सैड हो गया। कोविड अब खांसी जुकाम है यार, बताया तो है मैंने इतनी बार, कुछ नहीं है कोविड में, क्या हो रहा है, तुम रिलैक्स करो यार। बट रितु जी की भी चलो अब अच्छी बात है, उनको कोविड है तो उनपे जोक हम और अच्छे से मार सकते हैं। रितु जी की बायो बेस्ट बायो, लव लिसनिंग म्यूजिक। रितु कभी मीटिंग में बैठी है, आशिमा वहां से बक 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 कर रही है, रितु कहते हैं ये तो पागल है, कान में हेडफोन लगाए, बिजली ही बिजली। रितु को नहीं मतलब तुमसे, तुम पागल हो यार, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, मेरे को समझ नहीं आता। मैं भी अपनी कॉलेज के ई सेल में था। मेरे कॉलेज का जो ई सेल था ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था। लाइक कभी भी मैं अगर उनके पास जाता था आइडियाज लेके, तो वो आगे से ये बोलते थे आइडियाज नहीं चाहिए, स्पॉन्सर लाओ स्पॉन्सर, पैसे लाओ पैसे, हमें सोसाइटी में पैसे चाहिए। आइडिया से क्या होगा, तुम बड़ा यहाँ से जाके जेफ बेजोस बनोगे, हमें वो लाओ स्पॉन्सर लाओ पैसे। तो मुझे लगता है आपके ई सेल का भी यही है। विधि ने इशारा करा है, विधि ने ऐसे ऐसे करके पॉइंट करा है आशिमा पे बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये, मेरे को बताओ क्या लगता है, तुम एक सीरियसली बात बताओ, सुनो सारे सुनो ध्यान से सुनो। We have our faculty. मैम सी इट्स जस्ट अ जोक, नथिंग। ये तो मैम मेरे को सीरियसली मत लेना। बट मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि ये आशिमा ने ना सोसाइटी नहीं शुरू करी। आप देखो इनकी सोसाइटी में 4 बनिया है और कोर में तो 3 बनिया है। मुझे ऐसा लग रहा है आशिमा का जो एम है ना, वो ई सेल खोलना नहीं है। आशिमा चाहती है ये अग्रवाल सभा की धर्मशाला खोलनी, और ये ट्रस्टी बनाएगी यहाँ पे, जैसे हम बनियों में बनते हैं, है ना, 10-10 हजार के ट्रस्टी, 15-15 हजार के ट्रस्टी। महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल खोलेंगे। एग्जैक्टली। Knew it, एक बनिया जोक आने वाला है। I knew it. You knew it? I knew it. आप कर मैं लो, भी एक्सपेक्ट कर रही थी। आप कर लो मम्मी। ये क्या नाम था, ये कौन सी थी, प्रियांशी थी ना, ये प्रियांशी करेगी कॉमेडी, मैं तो जा रहा हूँ, प्रियांशी करेगी। No, you do it. You do it. अरे नहीं प्रियांशी, जस्ट किडिंग। अरे बजट दिया है, आप ही करोगे, उसको नहीं मिला। तो अरीवा जी है क्या, अरीवा जी? अरीवा जी, Hi, अरीबा मुझे दिख। हेलो अरीबा, हाउ आर यू, कैसे हो? I'm good. How are you? आई एम गुड अरीबा। तो अरीबा आपकी भी मैंने बायो देखी थी। आपकी बायो थी अरीबा, व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट। तो मेरा आपसे एक सवाल था, जैसे आप सपोज करो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, नथिंग इज गोइंग राइट, राइट का रास्ता बंद है, पर लेफ्ट का भी रास्ता बंद है, तो तब आप क्या करेंगी? आप गाड़ी को रोकेंगी या लेफ्ट की दीवार में मार देंगी? क्योंकि आपका ना व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट, तो आप तब क्या करेंगी अरीबा जी? अरीबा ने क्या स्टूपिड जोक मारा है चेतन, हंसी भी नहीं आएगी। मैं ऐसे ना मतलब मजबूरी में तेरे को आंसर करूंगी बस। अब क्या यार तू भी। बट वैसे अरीबा जी आप बताओ, आपको सोसाइटी पसंद है, ई सेल में आपको मजा आता है? हाँ जी, मजा आता है। कैमरे पे थोड़ी सच बोलोगे आप। वो पहली बारी थोड़ी बोल रही है, हर दिन बोलती है, वो मेरे को मैसेज करती है। हाँ, क्योंकि उसको अगला सीनियर चांसलर बनना है ना, इसलिए मैसेज कर रही है वो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है ये बात? That is so true. मैं बता रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो बातों को। really saying आपके जोक्स तो इतने ट्रू लग रहे हैं कि मतलब that's really true. मैं बता रहा हूँ यार, मैं LIC से मेरा पुराना वास्ता है। बट लाइक सब बातें हो गई। अब जो मेन बात है ना, आपकी सोसाइटी में there is only one girl who's actually into entrepreneurship. तुम सब टाइम पास करो, there is only one girl, Janice Oberon. Where is Janice? I want to talk to Janice. There I am. Hi Janice, how are you? Oh, I am good. देखो जो मैंने बोला, मैंने अब तक जानिस को देखा भी नहीं था। जानिस सूट पहन के बैठी है, बिजनेस सूट टाइप है ना। See, that is number point 1 why Janice is the most serious, and the second point why Janice is most serious is Janice की डीपी देखो। Janice ने अपना सेट कर लिया, उसको गफार में आईफोन के कवर की दुकान खोलनी है। देखो वो बंदी अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रही है डीपी में। Like Janice is so away from aspects of beauty, उसे नहीं दिखानी अपनी शक्ल, वो अपना बिजनेस प्रमोट कर रही है। मैं अपना आईफोन दिखाऊंगी, मेरे को गफार में स्टार्टअप खोलना है। तो गाइस, all of you should learn from Janice and you know, उससे सीखो अब एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैसे सीरियस होते हैं अपने काम। चोर बाजार,
कुलवर्धन लिखा चोर बाजार। अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। देखो ये अभी आपको, मैं तो फिर भी गफार के लेवल तक लेके गया था, ये आपको चोर बाजार पे लेके, आई कांट डू दिस। We have नेटवर्क मार्केटिंग वाले 25 दिन में BMW, ये भी मैं मानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी करते हैं। Exactly. गफार मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सेम ही है। ये मेरी सारी बातें थी, ये मेरे सारे जोक्स थे। अगर किसी को कोई भी चीज बुरी लगी हो यार, तो लगती रहे बुरे। नहीं आशिमा, यू क्या करो, लगती रहे बुरे। मेरे को जूम में से मुक्का मारोगे, तुम क्या करोगे? छोटी बात करोगे क्या? बट कर तो मैं सकती हूँ कुछ, धमकियां मत दो यार। बट एनीवेज, सारी मजाक की बात हटा के किसी भी चीज को सीरियसली मत लेना। दीज आर ऑल फन लाइट बैंटर। पर बोला तो मैंने सब कुछ सच्ची था। अब मैं जरा थोड़ी सी चैट पढ़ लूं आपकी। मेरे को चैट में काफी कुछ दिख रहा है। मुस्कान को मजा नहीं आया। मुस्कान चौहान ने सिर्फ एक हंसने वाला इमोजी भेजा। मुस्कान कह रही है चेतन यू कैन डू बेटर। मुस्कान को मजा नहीं आया। वो सब तो काफी बहुत ज्यादा चैट हो रही है, मैं नहीं पढ़ सकता, बहुत ही ज्यादा चैट हो रही। चेतन भाई, यो चेतन। तो चलो गाइस, दिस वाज ऑल माय जोक्स फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। और Everyone loved it. I was completely going through the roast plus the chat. The chat was going crazy and everyone was loving your content on Instagram and here. I just loved it. The way you roasted everyone, especially Ashima. I genuinely wanted you to roast Ashima because Ashima was रोस्ट का कर। मैं तो नहीं मतलब रोस्टिंग, मैं तो प्यार कर रहा है। मैं तो अपना सच्चाई बताई, सच्चाई फ्रेंडशिप इजहार कर रही है। तो आशिमा आप बोले, आप बड़ी देर से चुप है। आशिमा आप कुछ बोलिए प्लीज, आप कुछ जवाब दीजिए। मैं जानना, मेरे एयरपोर्ट्स तीसरी बारी गिर रहे हैं हंस हंस के। सो या मैं क्या बोलूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई लाइक द जोक्स। ये गोल्ड मेडल क्या लगाया हुआ है तुमने यहाँ पे? ये मेडल नहीं, इसे बैज बोलते हैं। इस पे लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप सेल प्रेसिडेंट। अपने पैसे देके तुमने खुद छपाया ना, सिर्फ अपने लिए? नहीं, इसके लिए कॉलेज के पास बजट है। अच्छा, ये कॉलेज ने बजट। गुड यार, गुड। बाकी if you want to take any question answer, so we can do that if we have time. I don't know. मैं कुछ बोलूं? Thank you so much for bringing up the reality in front of everyone. And this is entrepreneurship cell, and we are not doing any fashions over here. Thank you. Oh shit. But anyway, I just feel the E-Cell is doing great, and Chetan, you did great. One last question from my side before we end this amazing session. You started your journey with content creation, and content creation से आप पहुंचे बॉलीवुड में, आपने करी रूही। तो how was that? अगर उस जर्नी से आप अगर कुछ भी एक ऐसी चीज जो हमें जेन्युइनली मोटिवेट करे वो शेयर कर सकते हो, तो बहुत अमेजिंग। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये मेरी जर्नी उल्टी थी। मैं पहले रूही में गया था, देन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। सो नाउ I'll tell you briefly how I went into रूही. So the thing is यार, I was bound to become a lawyer. मैं academically बहुत अच्छा था, and मेरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर वगैरह में भी एडमिशन हो गया था। My dad wanted me to be a lawyer. But एक दिन it's I guess the more self aware you are ना, the more you know what you actually want, the more you'll be able to reach your goal. तो मेरे को लगा कि यार मेरे को एक्टर बनना है, I want to be an actor. And मैं अपने आसपास किसी को भी बताता हूँ, हंसते थे, तू बनेगा एक्टर। And I was like यार बनना तो है. So I just took the plunge. I went to Bombay, then I did my hard work. See, I'll tell you in short, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, आपको सिर्फ दो चीजों का मिक्स करना पड़ेगा। एक है डिसिप्लिन और दूसरा है पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ। आधे लोग क्या करते हैं, आधे लोग काम बहुत करते हैं बट उनका नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आधे लोग क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ 10 सीक्रेट पढ़ ली पर वो काम कुछ नहीं करते, वो सोचते हैं बस घर में बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो वो नहीं हो। इफ यू कैन जस्ट मेक अ सिनर्जी ऑफ दीज टू थिंग्स, there is nothing that can stop you. And secondly, I'll tell you one more thing guys, last में, read books and watch YouTube. And watch YouTube का मतलब ये नहीं बिजली की म्यूजिक वीडियो देख रहे हो। Watch YouTube मतलब YouTube पे जो अच्छा कंटेंट है वो देखो, आपकी लाइफ की बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड आज मैं अपनी स्टोरी पे ना अभी कुछ बुक्स जो मेरे को लाइफ में बहुत हेल्प करी है, I'll share them on my story, so you guys can go and check that out and please read those books. Trust me, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो यार। आज से 2 साल पहले अगर कोई मेरे को बोलता ना कि मेरे 40,000 फॉलोअर्स होंगे और मैं 300 लोगों के आगे ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं कहता भाई पागल है क्या, तो तूने भांग पी लिया, मेरे को पिलाने वाला है। बट दिस इज हैपनिंग, सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। So what we learn from Chetan is hard work and dedication. These things are important. बस घर बैठ के सपने नहीं सजाने, you have to move your body and do that hard work.
उन्होंने वो चीज अचीव की है और हम भी करके दिखाएंगे. एंड एक लास्ट चीज है जो बार बार आ रही है, स्नेहा वत कह रही है कि शार्क टैंक वाला कर दो एक बार प्लीज. इफ यू कैन बी शार्क टैंक वाला कर दो एक बार. मेरे को बोल दो शार्क टैंक में. Shark Tank वाला. I am just not able to recall the name of that judge. Anupam. Shaadi.com वाला. Anupam. That, yes. अनुपम वाला. तो आशिमा जी, आप एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर है, आप एक नौजवान एंटरप्रेन्योर है, पर जो आपने मेरे को बिजनेस प्रपोजल दिया है कि आपके कॉलेज से लेके श्रीराम सेंटर तक एक पुल बना दिया जाए, वो मुझे इतना फीजिबल नहीं लग रहा, उसमें इतनी स्केलेबिलिटी नहीं है. So for those reasons, I am out. Wish you all the best for your future. ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं भी इससे बाहर हूँ. He did his homework genuinely, like, you know, so creative. I genuinely wish you all the best. You have such a creative mind, and you are amazing what you do. And I just loved your reel, वो खांसी वाली है, जब दिल्ली में हर जगह सबको गला खराब हो रहा था. मैं कसम से मैंने कम से कम 15 बार ही देखी वो चीज, and I was just so happy. And मैं तब से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया. And I just want to thank you because you were the part of the entrepreneurship. I think I am speaking it right. Entrepreneurship Fest of Lady Urban College. On behalf of everyone, I thank you, ladies and gentlemen. Go follow Mr. Chetan Goyal. Go follow Mr. Nipun Jawan. हम दोनों को follow करो, story डालो, हम दोनों को tag करो. And इससे मुझे आता है कि हम एक snapshot लेंगे. Yes. मुझे थोड़ी देर में लग रहा है निपुण पता है क्या बोलने वाला है. अपग्रेड की तरफ से आपको मिलता है ये डिजिटल कोर्स आपकी लर्निंग के लिए. थैंक यू सो मच. बिजनेस एनालिटिक्स. ओके, कोई नहीं, हम सब करा देंगे अपग्रेड की तरफ से. बिफोर चेतन लीव्स, आई जस्ट वांट अ सेल्फी. तो चेतन एक पोज प्यारा सा अपनी स्माइल दिखाते हुए एंड एक स्नैपशॉट इन 3, 2, 1. It's done. Thank you so much, Chetan. Thank you. Chetan, and I would request the core team, please take Chetan to the breakout area. Thank you so much, Chetan. Thank you so much. निपुण कह रहे जाओ बाहर जाओ, भागो यहाँ से, भागो. चलो के बाय. टेक केयर guys. Take care. Thank you boss. Okay, so I think everyone is enjoying. सबके थोड़े चीक्स में दर्द हो रही है कि नहीं हो रही, ये बताओ मुझे फटाफट. हो रही है. अब without wasting time, I'll call the next speaker. He's a stand-up comedian and a YouTuber. He had been ranked second in the top 20 Indian stand-up comedians in 2014 by CNN IBN and was shortlisted in Forbes top 100. Wow, this is amazing. He has also done a lot of corporate shows for Airtel, Tanishq, Amex, Reader Mirchi, and today he is doing a show for us at the Entrepreneurship Fest of Lady Urban, which is eSummit 2022. So, ladies and gentlemen, I welcome on stage Gupta ji, Apurv Gupta, for you all. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. Apurv. थैंक यू सो मच गाइस मेरे को अनम्यूट करने के लिए, बिकॉज अभी मेरे को म्यूट ही किया हुआ था. बिफोर वी स्टार्ट, या थैंक यू. कैन यू, yes, and can you please the